just to recap what we have been discussing past 2 days. हामीहरूले गत 2 दिनमा के कुराको चर्चा गर्यौं भन्ने कुरालाई एक्चुअली सारांशमा एक्चुअली फेरि पुनरावलोकन गरौं. First of all, I should say good morning. Tout d'abord, je devrais vous dire पहिला म हजुर सबैलाई शुभ प्रभात भन्न चाहन्छु. So, in case there are people who just are coming today, we have been talking about what we call Namthar Gosum, which is the 3 doors of liberation, which is explained in many, many different levels. Et donc pour les personnes qui se joignent à nous aujourd'hui, nous avons étudié Namthar Gosum, qui sont les 3 ports de la libération, et qui peuvent être expliqués sous différentes formes. मुक्तिका 3 द्वार अथवा 3 विमुक्तिको विषयमा हो र यसलाई विभिन्न तहमा व्याख्या गरिन्छ अथवा बुझ्न सकिन्छ. And it's not just explained, it's also symbolized in many different levels, especially in the Tantrayana. अनि यसलाई व्याख्या मात्रै विभिन्न तहमा गरिने हैन कि यसलाई सांकेतिक रूपमा अथवा निमित्तको रूपमा विभिन्न हिसाबले पनि यसलाई अभिव्यक्त गरिन्छ, विशेष गरेर तन्त्रयानमा चाहिँ. Which is something you could also say sort of the core element of so-called Buddha Dharma. Et on pourrait aussi र dire यसलाई बुद्ध धर्मको चाहिँ आधारभूत तत्त्वको रूपमा पनि भन्न सकिन्छ. At glance, it is kind of difficult to understand this three. Et à première vue, c'est assez difficile de अब comprendre झट्ट ces हेर्दाखेरि 3 portes. योसँग सम्बन्धित सत्यलाई बुझ्न अलिकति कठिनै होला कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ. But if you get used to it, to the language, its nuances, it's just I don't know the logic. Then it's not like unreachable. Mais si अब यदि on s'y तपाईहरुले habitue, यसको भाषा, si on s'habitue à यसका ces मसिना nuances, बुदाहरू र à ces logiques, यससँग c'est- सम्बन्धित on peut युक्ति अथवा comprendre. तर्क Excusez-moi, j'ai perdu le son. अभ्यस्त बनाउनु भयो भने चाहिँ यो C'est assez त्यति accessible. बुझ्न गाह्रो अथवा अबोधगम्य कुरा पनि होइन, बुझ्न सकिन्छ, बोधगम्य छ यो. And as I've stressed this yesterday, it's really nothing sort of beyond your life. We are not talking about anything mythical or anything that is beyond what we have. Et र comme je l'ai dit अहिले hier, हाम्रो अगाडि जुन कुरा il अभिव्यक्त n'y a rien qui भइरहेछ soit au-delà de त्यो votre भन्दा vie, on धेरै parle पर absolument यो जीवनभन्दा pas de पर quelque chose de एउटा mystique रहस्य ou, जस्तो अथवा मिथकको qui soit रूपमा quelque chose qu'on n'est pas. भएको कुरा होइन यो. But as I've been repeating this a lot, because of the language, because of the culture, it can sound very exotic and very religious even. Mais comme र je l'ai मैले répété बारम्बार les दोहोऱ्याए derniers जस्तै jours, du fait de la भाषाको कारणले langue, गर्दा, de la संस्कृतिको culture, कारणले ça peut गर्दाखेरि sembler चाहिँ un petit peu यो कहिलेकाहीँ exotique. एकदमै विचित्र, एकदम रहस्यमय अथवा mystique. कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम धार्मिक जस्तो पनि लाग्न सक्छ हामीलाई. Okay, I'm going to recap the first liberation one more time. Donc je vais अब एक्चुअली म reprendre फेरि la पहिलो première मुक्तिको द्वार libération, अथवा encore पहिलो une fois. मुक्तिलाई एक्चुअली फेरि सारांशमा भन्न जाँदैछु. And I'm going to come from a different angle. Je vais र l'aborder म sous une यसलाई autre आज perspective, sous un autre अर्को angle. पक्ष अथवा दृष्टिकोणबाट आज व्याख्या गर्छु. Okay, one maybe very good example is the concept of the middle of sky, in the middle of the sky. Donc un bon अब exemple एउटा peut-être राम्रो serait उदाहरण यसलाई le बुझ्नलाई के milieu हुन du सक्छ ciel. त भन्दाखेरि अन्तरिक्ष अथवा आकाशको केन्द्र भन्ने धारणालाई हामीले उदाहरणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं. You know how it's,
You know, I can tell you, in the middle of the sky, then you will all sort of accept. Alors, je pourrais vous अब dire, मैले au के milieu कुरा du भन्न ciel, et सक्छु vous त aurez भन्दाखेरि tous à आकाशको accepter बिचमा cela. अथवा अन्तरिक्षको केन्द्रमा भन्न सक्छु र तपाईँले पनि मोटामोटी रूपमा त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ हुन त But if you contemplate, it is really an arbitrary statement. Mais si vous तर contemplez, vous allez vous rendre यदि compte qu'en तपाईँले fait, चिन्तन c'est une गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो affirmation एउटा complètement एकदमै arbitraire. तथाकथित एकदम यत्तिकै दिएको उपमा मात्रै हो त्यसको कुनै पनि एउटा आधार हुँदैन You know, like, which one is the middle? Et ce serait किन quoi भन्दाखेरि le milieu अन्तरिक्ष finalement? केन्द्र कहाँ छ त कुन हो But it works for us. I can say in the middle of the sky. We can say this. Et pourtant, ça marche. तर अब Entre nous, हामीहरूलाई on peut त्यसले dire काम le गर्छ milieu du भाषागत रूपमा ciel. किन भन्दाखेरि C'est मैले अब possible. अन्तरिक्षको अथवा आकाशको केन्द्र अथवा मध्यमा भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई स्वीकार्छौँ होइन Usually it's above your head. Et en général, सामान्यतया c'est त्यो हाम्रो au-dessus de ठ्याक्कै notre टाउको tête. माथिपट्टिको बिन्दु हो Just because you have a head, that's it. No other Et ça, reason. c'est juste त्यो lié au किन fait त que भन्दाखेरि vous ayez हाम्रो une tête. टाउको भएको कारणले गर्दा अरू Plus कुनै que पनि ça. कारणले गर्दा होइन Then there are concepts like long time ago. Ensuite, il y a des अनि concepts अर्को du type धारणा पनि il y a très हामीले longtemps. यहाँ ल्याउन सक्छौँ उदाहरणको लागि धेरै समय अगाडि परापूर्व काल भन्छौँ नि हामीले Yes, again, on the relative level, it works to communicate like Et that. encore une fois, अब à un niveau सामान्यतया relatif, व्यावहारिक तहमा ça भनौँ अथवा fonctionne de समृद्धिको तहमा communiquer चाहिँ de la sorte. त्यसले पनि काम गर्छ हामीले त्यसलाई स्वीकार्छौँ Again, if you contemplate, then it really doesn't mean much. Mais encore une fois, तर si यदि on चिन्तन गऱ्यो भने contemple, त्यसको ça veut pas खासै dire कुनै grand-chose तात्विक finalement. अर्थ हुँदैन So I'm giving you this as an example. So there are a lot of things that actually all of the things that we say or do or we construct, we have a certain logic, certain reason why it is like that. Et je vous donne ça र comme exemple, mais en fait, अधिकांश toutes les वस्तुहरू choses र एक que हिसाबले nous भन्ने हो भने disons, que nous सबै faisons, कुराहरू que nous हामीले construisons, भाषागत रूपमा une अभिव्यक्त certaine गर्ने कुराहरू logique, चाहिँ une raison यही दायराभित्र पर्छ pour तर laquelle nous faisons त्यसलाई cela. यो हो भनेर हामीले स्वीकार्नको लागि हाम्रो आफ्नै किसिमको धारणा आफ्नै किसिमको तर्क अथवा युक्ति हुन्छ You know, like we just cannot anymore change the order of Sunday and Monday. Let's put Monday in the middle of Saturday and Sunday. We just can't do that anymore. Et on ne peut plus, par अब exemple, हामीहरूलाई मन changer लाग्यो l'ordre भन्दैमा हामीहरूले entre dimanche et lundi. आइतबार Si on voulait सोमबारलाई mettre चाहिँ lundi entre le शनिबार र samedi आइतबारको et le बिचमा dimanche, राखेर en अब fait, ça यसरी marche हामीले plus, यसलाई on peut मानौँ plus भनेर faire ça. हामीले फेरि भन्न सक्दैनौँ त्यो सम्भावना छैन Habitually, it's why should we? It's such a waste of En energy. même temps, अनि यो हामीले pourquoi il गर्नु faudrait qu'on जरुरी fasse पनि ça? छैन बेकारमा C'est- ऊर्जा मात्रै on gaspille खेर notre जान्छ énergie त्यसमा comme ça. So time, space, all these, we have a certain reason and logic to prove that they exist. Et donc, र le temps, दिक् र काल अथवा l'espace, समय र en fait, on a une certaine स्थानलाई raison pour हामीहरूले prouver बुझ्ने que ce sont des concepts qui जुन एउटा existent. पद्धति छ त्यसको पनि आफ्नै आफ्नो तर्क आफ्नो बुझाइ छ र त्यसरी हामीले त्यसलाई स्वीकार्छौँ According to the Buddha, every reason we give to establish something exists or does not exist, in fact, proves that everything is an illusion. Et selon le Bouddha, र toutes भगवान les बुद्धले raisons भन्नुभए que अनुसार l'on यो donne संसारमा pour कुनै prouver पनि que ça वस्तुलाई existe हामीले ou pas, या त en fait, अस्तित्वमा छ या त montre que अस्तित्वमा छैन c'est une illusion. भनेर तर्क गर्नु नै ती वस्तुहरू चाहिँ मायावत हुन् एक किसिमको भ्रान्ति जस्तो हो भनेर त्यसलाई स्थापित गर्छ त्यसले भनेर भन्नुभएको छ So this is why the ground or the base of all phenomena has no inherently existing entity. Et c'est pour ça que त्यसैले la गर्दा base de tous les phénomènes जति पनि धर्महरू छन् n'est भनेको pas मतलब une हामीले अनुभव गर्ने जति पनि entité कुराहरू qui छन् existerait त्यो de manière कुराहरूको inhérente, साँच्चीकै ne sont pas des वास्तविक entités qui existent आधारभूत de manière inhérente. अस्तित्व अथवा तत्त्व हुँदैन You know, like just like there's no such no ground, no
solid, truly existing entity called the middle of the sky, the middle of the sky. जस्तै हामीले आकाशको बीचमा भन्नु भन्यो त्यो आकाशको बीचको कुनै पनि एउटा आधारभूत तात्विक भूमि यही हो भनेर औल्याउन मिल्ने त्यसलाई आधार मान्न मिल्ने ठाउँ हुँदैन Okay, let's translate this into something more practical. यसलाई अब अलिकति व्यावहारिक तहमा अनुवाद गरौँ अथवा रूपान्तरित गरौँ. So you will want to ask questions like, okay, so all these, sort of philosophical, analysis. What's the point? What do I get out of this? अब हामीले अहिलेसम्म चर्चा गरेको जति पनि दार्शनिक अथवा सैद्धान्तिक पक्षहरू जति पनि गर्यौं यसको साँच्चै उपादेयता अथवा महत्त्व के त? And just about, I think on the first day, a lady asked about the vipassana, and I think this is the answer for you. Et si je me rappelle bien, le premier jour, il y a une personne qui avait posé une question sur vipassana. हाम्रो महिला मित्रले चाहिँ विपस्सनाको बारेमा प्रश्न गर्नुभएको थियो र उहाँको प्रश्नको जवाफ हो यो. So this is something that you can apply as a practice. C'est quelque chose là यो चाहिँ तपाईले आफ्नो अभ्यासमा उतार्न मिल्ने अथवा अभ्यासमा आफूले अवलम्बन गर्न मिल्ने उपाय नै हो. This is exactly what those Burmese monks, such as the Sun Lun tradition, those who practice vipassana, that's what they do. र यो चाहिँ ठ्याक्कै जुन चाहिँ बर्मिज परम्परा छ सुनलुनको त्यो परम्परामा उहाँहरूले के अभ्यास गर्नुहुन्छ त्योसँग त्यसैबाट लिएको उदाहरण हो. Okay, so something like this. I will just make it very easy to understand. Donc je vais essayer de le rendre assez facile pour que vous compreniez bien. विषयमा कुरा गर्छु तर यसलाई अलिकति बुझ्न सजिलो हिसाबले म यसलाई प्रस्तुत गर्छु. Maybe for beginning 2-3 weeks they will just look at the hand. Just look, just observe. Peut-être que pendant les 2 र सुरुवातमा 2-3 हप्ता उनीहरुको अभ्यासमा के गरिन्छ भन्दा आफ्नो हातलाई मात्रै हातलाई हेर्ने निरन्तर रूपमा. They don't think in terms of good hand, bad hand, old hand, young hand, none of that. Just observe, just observe. Donc ils ne font र qu'observer. उनीहरुले हातलाई त्यसरी अवलोकन गर्दाखेरि हेर्दाखेरि राम्रो हात नराम्रो हात वृद्ध हात युवा हात बुढो अथवा तरुण हात भनेर हेर्दैनन् मात्रै हेर्ने काम गर्छन्. What they are trying to do is they are trying to develop. Remember the middle of the sky is exactly the same hand. Which one? यो अघि नै दिएको उदाहरण आकाशको मध्य भनेको जस्तै त्यहाँ के पनि छैन हातै हो हात मात्रै हात हो कुन चाहिँ हात भन्ने कुरा नै त्यहाँ प्रश्न जाग्दैन. So then after about maybe 4-5 weeks, actually I have some monks who we have amazing discussions and how they go through all these stages. र मैले केही भिक्षुहरूसँग संवाद पनि कुरा पनि गरेको छु र उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 हप्तामा कस्तो अनुभूति हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा अथवा यो पूरा प्रक्रियाको बारेमा पनि मैले उनीहरूसँग कुरा गरेको छु. So then they begin to not really look at the hand as a unit, one unit. र जब उनीहरूले त्यसरी अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हातलाई एउटा एकाइको रूपमा एउटा ढिक्काको रूपमा चाहिँ हेर्न छुट्छ उनीहरूको. Then they begin to see the nails, the skin, the wrinkles, everything kind of separately. अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यसरी अवलोकन गर्ने क्रममा चाहिँ अनि यो नङ अनि छाला अनि त्यसपछि हामीहरूको यो अरु हातका अंगहरूलाई छुट्टै एकाइको रूपमा हेर्न अभ्यस्त हुन्छन् उनीहरू थाल्छन् उनीहरूले. Like if you are a good carpet dealer, you can look at this carpet. They can already see the thread, the silk or not, whether it's mixed with the silk, pure silk or not. They can tell. Right? Et donc, par exemple, si vous vendez des कार्पेटको व्यापारीले जसरी कार्पेटलाई हेर्दाखेरि त्यसमा भएको त्यो सञ्जाललाई यो रेशमले बनेको छ कि छैन राम्रो एकदम शुद्ध रेशम हो कि हैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले निर्कल गर्न सक्छ. Yeah, I think so by the 10th, maybe 12th, 15th week, then they begin to see in parts. In parts, instead of like one unit. Like a forest. They don't see the forest, they only see trees. Et donc, à partir de la 10e semaine, 10औं 12औं अथवा 15औं हप्तासम्म यसरी अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो हातको एक-एकवटा अवयवलाई अथवा अंगहरूलाई चाहिँ छुट्टै रूपमा देख्न सक्छन्. जसरी हामीले अहिले एउटा जंगललाई हेर्दा जंगल देख्छौं तर पछि जंगल नदेखेकन जंगलको एक-एकवटा रुखलाई देखेको जस्तै उनीहरूले एक-एकवटा अवयवलाई देख्न थाल्छन् अथवा अंगलाई देख्न थाल्छन्. But
there is years and years, and in fact lifetimes and lifetimes of habitual pattern that you also still have to deal with. Mais en réalité, on a des années et des स्मरणीय कुरा के छ त भन्दाखेरि यसरी अभ्यास गर्दा गर्दै पनि हामीहरूको अनन्त जन्मको यो जन्मको पनि वर्षौंको संस्कार त छँदैछ, तर अनन्त जन्मको संस्कारहरू हाम्रो बानी बेहोराहरूसँग हामीहरूले अब यसलाई झेल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा त्यो त छँदैछ। And then some of them told me that sometimes they get really scared of even scratching their head, because usually when you scratch your head with your hand, right, just hand, one unit, but then they suddenly just can't help but, think, okay, a nail is just sliding on your skin. Et certains र यसरी अभ्यास गर्ने क्रममा अब कुनै एकजना अभ्यासले मलाई भने अनुसार चाहिँ पछि यसरी अभ्यास गर्दै जाँदै टाउको कन्याउन सुद्धा पनि डर लागेर आउँछ, किन भन्दाखेरि अब हुन त एउटा हातले टाउको कन्या त भने कुनै ठुलो कुरो त होइन, तर त्यसरी कन्याउँदै गइसकेपछि अभ्यास गर्दै गइसकेपछि उनीहरूको हातको एक एकवटा अवयवमा ध्यान गइसकेपछि चाहिँ त्यो एउटा नङले कन्याउँदाखेरि नङ केही होला कि भन्ने डर मनमा जाग्न थाल्छ। And then I don't know, maybe in 6 months' time, many say that suddenly they develop a humor. They just feel so funny that we call this hand, we buy moisturizer, we wear gloves. It's just so funny we do these things. अनि लगभग 6 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ उनीहरूको मनमा कस्तो एउटा भावना जाग्छ त भन्दाखेरि एउटा हास्यरस जाग्छ मनमा, भित्रपट्टिबाट नै एकदम यो सबै कुरा व्यङ्ग्य जस्तो लाग्न थाल्छ, किन भन्दाखेरि हामीले यो हातलाई सुरक्षित राख्नलाई विभिन्न किसिमको यो भनौँ न क्रिमहरू मलमहरू प्रयोग गर्छौँ, अनि त्यो कुरा चाहिँ एकदम असङ्गत अथवा एकदम हास्यास्पद हुन थाल्छ उनीहरू। Then I'm sure they must laugh a lot when they look at pedicure, manicure shops, अनि त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेपछि जब उनीहरूले यो हात नङहरूलाई भनौँ न पेडिक्योर म्यानिक्योर नङ हात काटिदिने नौनीहरूको अब पसल भन्नु पर्यो, तिनीहरूको पसललाई देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई सायद साह्रै हाँस पनि उठ्दो हो। Highlight my word, they feel humorous and funny. This word is important because all of this doesn't mean that pedicure, manicure is like evil, temptation, bad, distraction. I didn't say that. I'm just saying it's so funny. र यो हास्यास्पद भन्ने शब्दलाई चाहिँ तपाईहरूले जोड दिनु होला अथवा मनमा स्मरण गर्नु होला, किन भन्दाखेरि मैले त्यो भन्दै पनि यहाँ त्यो म्यानिक्योर पेडिक्योर अथवा नङ काट्ने, हातको खुट्टाको नङ काट्ने, हात र खुट्टालाई हामीले सम्हाल्ने भनेको कुरा चाहिँ एकदमै दोषपूर्ण, एकदमै समस्याजनक अथवा बन्धनमा पार्ने अथवा हाम्रो लागि हाम्रो मनलाई चाहिँ के भन्छ बिथोल्ने कुराहरू भन्न खोजेको होइन। मैले के मात्र भनेको त भन्दाखेरि यी कुराहरू एउटा समयमा हास्यास्पद हुन जान्छन् भन्न मात्र खोजेको। It doesn't mean that after 1 year you will not go to pedicure, manicure. यसको मतलब के होइन त भन्दा तपाईहरू 1 वर्षपछि फेरि नङ र हात र खुट्टाको नङ काट्ने ठाउँमा फेरि जानुहुन्न भन्न खोजेको चाहिँ होइन मैले। In fact, you might go daily to pedicure, manicure, but different attitude. Different, like the virologist I was talking about, a different way of looking at things. अब सम्भावना के पनि हुन सक्छ त भन्दाखेरि ça veut dire que vous y allez plus, au contraire, vous allez एउटा धारणा अथवा दृष्टि जागिसकेपछि तपाई अझ दैनिक रूपमा त्यो हात र खुट्टाको नङ काट्ने स्थानमा जान सक्नुहुन्छ। तर फरक के पर्न जान्छ त भन्दाखेरि तपाईको दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ। मैले भने थिएँ नि अस्ति पनि, एउटा जीवाणुको वैज्ञानिकले कसरी जीवाणुलाई हेर्छ भन्ने कुरा जस्तै यो धारणा जागिसकेपछि चाहिँ तपाईको दृष्टि परिवर्तन हुन्छ। They might even open a vipassana pedicure manicure shop. उनीहरूले के पनि गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि विपස්සना केन्द्र सँगसँगै हात र खुट्टाको नङ काट्ने पसल पनि त्यहाँ थाप्न सक्छन्। The example I'm giving you is a very, very just a very small, and just apply what I just told you, everything.
to everything we look at in our life. अब मैले यो दिएको चाहिँ एउटा एकदम सानो उदाहरण मात्रै हो, तर यो उदाहरणलाई तपाईले लिएर आफ्नो जीवनको हरेक पक्षमा यसलाई प्रयोग गर्नु जरुरी छ। Relationship, सम्बन्धहरू, family, परिवारहरू, children, आफ्नो बालबच्चाहरू, education, आफ्नो शिक्षा, political système, éducation, राजनीतिक परिवेश, just everything, you know. हरेक कुरामा यसलाई प्रयोग गर्नु जरुरी छ। Okay, the important question here is where does the compassion fit in? Et donc là, la question अब यहाँ importante, c'est où एउटा est-ce que महत्त्वपूर्ण la प्रश्न compassion के est जाग्छ त भन्दाखेरि यो सबैको बीचमा करुणा कहाँ आउँछ त? कुन ठाउँमा करुणालाई हामीले राख्ने? It fits in so well because that itself is the compassion. Et en fait, elle est complètement là parce que en एकदम soi, ça, c'est तादात्म्यमा la आउँछ, compassion. राम्रोसँग यो जोडिन आउँछ। किन भन्दाखेरि यो जुन हामीले गर्ने पद्धति अथवा यो गराइ नै के हो त भन्दाखेरि करुणा हो। It's not like a compassion that has a hierarchy. Oh, poor guy, you know, he needs a little bit of help. It's, you know, like a hierarchical compassion. Et c'est pas यो du tout कुनै une पनि किसिमको त्यो compassion वरीयता ou क्रम quelque chose lors de la सँग सम्बन्धित hiérarchie où vous dites ah, ऊ pauvre सानो अनि म personne, ठुलो il a भएकोले गर्दा besoin उसलाई de कठैबाट mon aide. भनेर गरिने करुणा होइन। It's such a amazing compassion because you know all those who goes to pedicure, manicure, that they're all looking at a unit, one unit. Et c'est une compassion merveilleuse parce qu'en réalité, vous savez que toutes ces personnes qui vont se faire une manicure, une pédicure, l'envisagent comme une unité. अब नेपाली कतिले पेडिक्योर म्यानिक्योर नबुझ्नै सक्नुहुन्छ यहाँ भएकोहरूले, त्यसले गर्दा मैले त्यसरी अलिकति उदिक रूपमा अनुवाद गरेँ। त्यस्तो ठाउँमा जानेहरूले चाहिँ आफ्नो हात खुट्टालाई अथवा आफूलाई नै एउटा एकाइको रूपमा देख्छन् भन्ने हिसाबले करुणा लाग्छ। So basically, yes. So this it's so related to your life. Donc ça, c'est र त्यसले गर्दा यो complètement हाम्रो relié à votre जीवनसँग vie, dans एकदमै tout ce que vous faites. गहिरोसँग सम्बन्धित कुरा। This is what we call when you are knowing these, when you are looking at your life this way, you are gradually awakening. Et donc, quand vous savez यसरी cela, quand क्रमबद्ध vous रूपमा regardez तपाईले votre vie यो दृष्टिले avec cette आफ्नो जीवनलाई perspective-là, हेर्न थाल्नुभयो vous êtes भने graduellement en train de यसरी vous नै éveiller. तपाईलाई क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ जगाउँछ अथवा बोधतिर लान्छ। It's really doable. Et c'est très faisable. अनि यो गर्न सकिने कुरा हो। Sometimes, you know, we hear certain angle of teachings. Et parfois, on कहिलेकाहीँ entend, हामीहरूले certains enseignements उपदेशलाई एउटा दृष्टिकोणबाट दिएको पाउँछौँ। I call these teachings the teachings that believes in no pain, no gain. et j'appelle ces enseignements les म यो enseignements qui हाम्रो croient उपदेशको si on ne शीर्षकलाई चाहिँ souffre pas, il n'y a rien जहाँ à दुःख gagner. छैन त्यहाँ फाइदा पनि छैन भन्ने शीर्षक दिन चाहन्छु। And these teachings, yes, we do teach this Et sometimes. on र enseigne ça यस्तो उपदेश पनि parfois. हामीले दिने गर्छौँ Because we human beings, again, love this kind of statement. No pain, no gain, no free lunch. Oh, wow, we have to work hard. We have to go to Harvard. You know, we love these. So, for them, Buddha teach like that. Parce que nous, en र tant अब qu'être हामीहरूको humain, on aime ce समाजमा genre de मान्छेहरूलाई choses. चाहिँ Ah, दुःख नगरिकन सुख पाइँदैन il faut que je अथवा m'efforce dur pour avoir ce que सित्तैमा je खान veux, पाइँदैन donc अथवा faut que je fasse des हार्वर्ड études à जानुपर्छ Harvard, दुःख नगरिकन etc. कहाँ सुख हुन्छ Et भन्ने du coup, कुराहरू pour हामीहरूलाई मन पर्छ। genre हाम्रो de संस्कृतिको personnes एउटा qui pensent comme ça, on a ce genre दृष्टिकोण नै d'enseignement. भइसकेको छ। But you know, Buddha also taught so many times, in fact more, no pain, all gain. Mais en fait, र le Bouddha बुद्धले a aussi enseigné धेरैचोटि que कस्तो पनि उपदेश दिनु भएको छ त भन्दाखेरि कुनै पनि दुःख बिना पनि le fait de सबै pas कुरा souffrir, प्राप्त on peut गर्न tout सकिन्छ gagner. भन्ने उपदेश पनि दिनुभएको छ धेरै ठाउँमा। Actually, his name is Suggata. en réalité, son nom, c'est र उहाँको एउटा नाम चाहिँ के पनि हो त भन्दाखेरि राम्रो गतिमा गएको अथवा सुगत पनि हो। I mean, Suggata, if I translate it in a very, very, you know, current atmosphere, I would say, you know,
No pain, all gain gone. अब अहिलेको परिवेशमा यदि हामीले सुखद भन्ने शब्दलाई अनुवाद गर्यौं भने चाहिँ कुनै पनि दुःख बिना सम्पूर्ण कुना प्राप्त गरेको गतिमा गएको अवस्थामा गएको भन्ने मिल्छ। But I know, even in here, yes, right, as I tell you, okay, no pain, all gain. You know, there's something like this kind of teaching exists. And you are all like, okay, very good. But when it comes to practice, you will all opt for no pain, no gain. I know, this is just human mind. Et vous voyez, là, je vois tous, quand je vous ai dit sans douleur, finalement, on peut aussi tout avoir. Vous étiez tous là, ouais, super, mais je sais très bien que quand vous allez commencer à pratiquer, vous allez choisir sans douleur, il n'y a rien, parce qu'on a un esprit humain. So now the second liberation, by the way, three liberations are very related. Et donc là, on va aborder la deuxième libération. Et ce faisant, les trois libérations sont très liées. Okay, so I'm basically quoting from Tsangpe Shubindo, the Brahma Paripriksha Sutra. Ani अब मैले यो ब्रह्म परिप्रेक्ष्य अथवा ब्रह्माले प्रश्न गर्नुभएको सूत्र भनी छ त्यसबाट म उद्धृत गर्दैछु। Okay, path is beyond sign, beyond characteristic. Donc la voie est au-delà des signes, au-delà de toute caractéristique. And I think we also talked about how we are bombarded with the signs. Et je pense qu'on a aussi abordé le fait de combien on est bombardé de signes, de symboles. हामीहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा विभिन्न किसिमका संकेत चिन्ह निमित्तहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा अब हामी बगिरहेका हुन्छ त्यसले हामीलाई निरन्तर रूपमा के भन्छ अब हिर्काइरहेको हुन्छ। Yes, because we have so many symbols, so many steps and all of that. Again, back to what I just earlier told you about how our habit just does not allow these characteristic less or sign less. Et de la même manière que ce que j'ai tout à l'heure, en fait, on a tous ces états, tous ces symboles, parce que notre esprit n'autorise pas le fait qu'il n'y ait pas de caractéristiques, qu'il n'y ait pas de signes. यो निमित्त रहितता अथवा अनियमितता अथवा संकेत रहितता अथवा साइन्सहरु संकेतहरु नदेख्नु पर्ने एउटा मार्गको लक्षण छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार्न सक्दैनौं। But if you are looking at the design of the teaching, it's all geared towards, it all arrives to this characteristic less. Mais si vous regardez comment sont dessinés les enseignements, ils sont tous paramétrés, des caractéristiques. मार्गको त्यही अनियमितता अथवा संकेतबाट पर संकेत रहितताको अवस्थासम्म पुर्याउनको लागि नै दिएका हुन्। It's all designed to destroy all the sign or symbol. Et ils sont dessinés et faits pour détruire, déconstruire tous ces symboles. नाश गर्नको लागि अथवा क्षय गर्नको लागि नै दिएका हुन्। All the methods of the Buddha are the method itself destroyed itself. Et toutes les méthodes du Bouddha sont là pour un moment s'autodétruire. उपाय कौशल्यले नै नाश गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ। Good example is sharpening knife. Et un bon exemple एउटा राम्रो उदाहरण के हो त भन्दाखेरि चक्कुमा धार लगाउनु or making fire. Le fait de faire du feu. अर्को चाहिँ आगो बाल्नु। Sharpening knife, what happens? You use the whetstone and the metal, the knife, and what's happening is the whetstone gets exhausted, and then the iron also gets exhausted. Et donc si vous prenez par exemple cette pierre qu'on utilise pour exécuter, qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand vous aiguisez votre couteau, à la fois la pierre se réduit et le couteau, le métal du couteau aussi. Fire and wood,
no wood, no fire. But a fire burn. It's very interesting, isn't it? The fire consumes the wood, and fire becomes bigger. So, yeah. So that's how it works. The path. Et donc c'est la même अब chose अर्को pour le उदाहरण feu et चाहिँ le bois. इन्धन On अथवा ne peut pas avoir दाउरा र de bois आगोलाई लियौँ. sans feu. Et en fait, le दाउरा feu बिना आगो बल्न consume पनि le सक्दैन, bois. तर Donc, आगोले il y a फेरि de त्यो bois, दाउरालाई le नै feu फेरि के est गरेर हुन्छ grand. त भन्दाखेरि Et c'est la सकाइरहेको même हुन्छ, chose बालिरहेको pour हुन्छ. la voix. So, like, okay. I'm sometimes coming back to Tantra because Nepal is so related to Tantra. Et donc je reviens र souvent au tantra parce que म le Népal बारम्बार est très connecté तन्त्रको au परिवेशमा tantra. फर्किँदैछु, किन भन्दाखेरि नेपाल तन्त्रसँग एकदम गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ. There are more tantric stuff going on around the Buddha stupa than anywhere else sometimes. Et र il y a बौद्ध vraiment स्तूपको énormément वरिपरि de choses जति liées au तान्त्रिक tantra कुराहरू हुन्छ त्यो autour सायद du अन्य stupa Buddha कुनै et पनि plus ठाउँमा qu'ailleurs. नहोला. The statues, the prayer flags, just everything. Les statues, अब les drapeaux de prière, tout प्रतिमाहरू, en बौद्ध fait. प्रतिमाहरू, अनि त्यसपछि हाम्रो यो झन्डाहरू भनौँ, अब यो लुङ्ताहरू, यिनीहरू सबै तान्त्रिक सङ्केतहरू हुन्. Okay, so in the Tantra, okay, so somebody asked this question, so I'm answering this today. The concept or the symbolism of deity. Donc, कसैले quelqu'un a posé la question hier, इष्टदेव donc je vais répondre अथवा là maintenant. Dans le इष्टमको tantra, le धारणाको विषयमा concept, प्रश्न le गर्नुभएको थियो. symbole de la déité. Okay, so the ingredient of deity, what makes a deity? Donc, les ingrédients d'une अब divinité, एउटा une déité, इष्टम अथवा qu'est-ce qui fait इष्टदेवलाई une बनाउने divinité? अवयव अथवा त्यसका अङ्गहरू के हो त? केले एउटा इष्टम बन्छ? It's actually these three doors of liberation. Non, en réalité, c'est यी trois portes de तीनटा la मुक्तिका libération. द्वारले नै इष्ट बन्ने हो. What is mandala? It's the three doors of Qu'est-ce qu'un liberation. mandala? Ce sont les मण्डला trois भनेको portes के de हो la त? मण्डला libération. भनेको यही द्वारहरू हुन्. Now, deity also appear as the provider of the blessing. Et la déité अब apparaît aussi comme इष्टम अथवा celle इष्टदेव को अर्को पक्ष के पनि हो qui त concède les भन्दाखेरि bénédictions. हामीहरूलाई अधिष्ठान अथवा आशीर्वाद दिने एउटा स्थान पनि हो अथवा एउटा व्यक्ति पनि हो. This actually works very well with the three doors of Et ça liberation. fonctionne bien अनि यो aussi कुरा avec les trois portes de la libération. मुक्तिका तीन द्वारसँग एकदम तादात्म्यमा हुन्छ अथवा तिनीहरूको एउटा तादात्म्य हुन्छ, मिल्छ. Because the highest blessing you should receive is to be free from obsession or the paranoia of duality. Parce que र सबभन्दा ठुलो la plus अधिष्ठान grande अथवा आशीर्वाद हामीले bénédiction के que माग्न l'on puisse सक्छौँ त भन्दाखेरि recevoir, c'est द्वैत de se प्रतिभास libérer de प्रतिको cette जुन एउटा obsession, डर छ, ou de त्रास छ, cette paranoïa त्यसबाट मुक्त हुनुको de, लागि हामीले माग्ने la अधिष्ठान नै dualité. सबभन्दा सर्वोत्तम अधिष्ठान हो. And that you receive from the three doors of liberation, okay? Et ça, vous र le त्यो recevez des अधिष्ठान trois अथवा portes de आशीर्वाद la हामीहरूलाई यही libération. तीन मुक्तिका द्वारहरूबाट प्राप्त हुने हो. Now, you and I, as a human being, the moment we talk about something like a blessing, then we have all other elements such as longing for the blessing. Mais vous, अब vous et हामीहरू moi, en tant तपाईँ हामी qu'être जस्तो humain, à partir du moment où सामान्य on व्यक्तिहरूको parle de एउटा bénédiction, धारणा के हुन्छ on a plein भन्दाखेरि d'autres éléments, comme par अधिष्ठान अथवा exemple le आशीर्वाद fait भन्ने बित्तिकै d'aspirer à हामीलाई être चाहिँ béni. आशीर्वाद पाउने एउटा लालसा हुन्छ. And this different sort of sophistication of longing, we have different kinds of deity. Et अनि यही अधिष्ठान प्राप्तिको एउटा लाई अझ बढी उच्च तहमा लानको लागि चाहिँ अथवा त्यसलाई अझ बढी परिष्कृत बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि विभिन्न तहका इष्टदेवहरू चाहिँ बौद्ध परम्परामा हुन्छ. Many of us
our longing is very, very Pour primitive. beaucoup d'entre nous, ce besoin, मध्येमा cette कतिको envie यो est लालसा चाहिँ très एकदमै primitive. प्राचीन अथवा आदिम हुन्छ. So because we have this very primitive dualistic longing, let's say you want a wealth. Et parce qu'on a उदाहरणको ce लागि हामीहरूको यो désir जुन चाहिँ très आदिम primitif, एउटा लालसा on छ veut être en त्यो bonne santé, लालसा par कस्तो exemple. खाली छ त भन्दाखेरि यो désir très द्वैत duel. प्रतिभासित छ. त्यसले गर्दा हामीहरूले के को La अधिष्ठान richesse, मान्छ pardon. त? सम्पत्ति लाभ होस् भनेर. You want a wealth, and that's about all blessing you want. You don't even know what 3 doors of liberation are. Et donc अनि on souhaite de la हामीहरूलाई richesse, et c'est सम्पत्ति tout ce पाए qu'on veut, पुग्छ. यो et on ne त्रिद्वार sait même pas ce अथवा que मुक्तिको sont ces त्रिद्वार 3 portes de भन्ने la कुरासँग libération. मतलब हुँदैन हामीलाई. Which is fine. We are not rejecting this. Et il n'y a aucun यो problème. पनि On ठिकै ne हो. rejette pas ça, यसमा हामीलाई tout va कुनै bien. दरकार छैन, समस्या छैन. So if you are looking for wealth is the driving force, then usually you will not go to a slim Manjushri. You will go to a plump Zambala. अब Et donc, यदि si ce que vous सम्पत्तिको souhaitez, लालसाले नै ce qui तपाईँले vaut अभ्यास mieux, गरिराख्नु भएको छ भने c'est d'avoir तपाईँले la richesse. एकदमै Vous n'allez pas अब chercher un manjushri दुब्लो un peu पातलो mince, मञ्जुश्रीको vous allez vouloir, भक्ति अथवा Zambala उहाँको un शरणमा peu जानुहुन्न plus, अथवा उहाँलाई तपाईँले charnu. भज्नुहुन्न. तपाईँ एकदम मोटो घाटो जम्मलको शरणमा जानुहुन्छ त उहाँलाई तपाईँले पुकार्नुहुन्छ भन्नु पर्यो. Yeah, have you been to Manjushri for the wealth? I don't think so. Most of the time, it's supposedly only good for wisdom. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes allé तपाईँहरूलाई voir un कसैलाई थाहा manjushri छ pour सम्पत्तिको avoir लागि अथवा plus de आफ्नो richesse? Je समृद्धि sais pas, en बढोस् भनेर général, तपाईँ il est मञ्जुश्रीका connu जानु pour la भएको छ र sagesse. मञ्जुश्री एउटै कुरालाई मात्र काम लाग्छ, खास केही कुरालाई काम लाग्दैन, प्रज्ञा प्राप्ति होस् भनेर मात्रै. Or if your father died, you don't pray to Saraswati. Et aussi यदि votre तपाईँको père, बुवा vous बित्नु भने ne तपाईँले priez pas à सरस्वतीलाई Saraswati. पुकार्नुहुन्न नि होइन. Or Zambala, right? You pray to Amitabha or something. We human beings have already give job descriptions to the deities. Ou vous n'allez pas prier non plus अनि pour Zambala, vous तपाईँले allez prier अब à Amitabha. सरस्वती Et अथवा en quelque जम्मलालाई sorte, चाहिँ on donne des पुकार्नुहुन्न नि job आफ्नो बुवा बित्नु भने. हामीले des job अमिताभ अथवा descriptions अरू à- कुनै aux इष्टदेवलाई divinités. पुकार्छौँ र एक On हिसाबले sait ce qu'elles हामीहरूले यी सबै Il y aura ceci une इष्टदेवहरूलाई activité. के गरिसकेका छौँ त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई एउटा जागिर एउटा आफ्नो काम बाँडफाँड गरेर यो काम गर्नु भनेर अडाइसकेका छौँ. So it depends. Okay, so now if you have a higher longing, the highest longing is basically longing for the bliss that is free from all the pain of duality. Et अब si सबभन्दा vous avez उच्च un कोटिको désir आकाङ्क्षा plus अथवा लालसा élevé, चाहिँ के हो त भन्दाखेरि vraiment le désir le plus द्वैत élevé qu'on प्रतिभास puisse avoir, रूपी c'est le दुःखबाट désir मुक्त भएको d'accéder à une सुखको अथवा félicité, आनन्दको on est अवस्था प्राप्त libéré des गर्ने souffrances liées à la dualité. Then all these tantric deities, tantric deities, they are not outside. Et donc dans ce र cas-là, toutes जति ces पनि déités यी tantriques ne sont तान्त्रिक pas à इष्टदेवहरू l'extérieur. छन् तिनीहरू साँच्चै के भन्यो भने बाहिर छैनन्. You are the deity. Vous êtes la हामी déité. नै इष्टदेव हौँ. And each and every one of them are designed to crush different kinds of, dualistic hang-up. Et र chacune de ces यी विभिन्न déités प्रकारका est इष्टदेवहरूलाई किन dessinée pour निर्माण mettre à गरियो mal les भन्दाखेरि différents हामीहरूको विभिन्न ancrages किसिमको द्वैत dualistiques qu'on peut प्रतिभास avoir. रूपी एउटा बन्धन छ होइन, त्यसलाई साँच्चीकै नाश गर्नको लागि नष्ट गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको हो यी इष्टमहरू. I have a lot of my friends who, like male friends, who tell me, they don't want to practice, Tara Tantra, because they say, I'm a man and I can't visualize myself as a woman. You see, all this indicates they don't really understand Tantra. Et donc j'ai des अब मेरा amis, कति पुरुष साथीहरूले के भन्नुहुन्छ spécifiquement भन्दाखेरि des मलाई hommes तारातन्त्रको qui me अभ्यास disent, गर्न मन लाग्दैन je peux pas faire किनभने les तारातन्त्रको pratiques अभ्यास गर्ने tantriques बेला de आफूले Tara आफूलाई parce महिलाको que je veux रूपमा pas me भावना गर्नुपर्ने हुन्छ. visualiser en त्यसै tant मलाई que मन femme पर्दैन. puisque en fait je suis भनेको un मतलब homme. उहाँहरूको Donc ça बुझाइ veut नै dire qu'ils कस्तो ont absolument pas देखिन्छ त compris भन्दाखेरि ce que c'était उहाँले que तन्त्र भनेको खास pratique के हो भन्ने tantrique. कुरा नि नबुझेको यहाँ स्पष्ट हुन्छ. You are supposed to crush all these distinctions. Vous êtes censé हामीले यी réduire à सम्पूर्ण néant toutes किसिमको ces जुन चाहिँ यो distinctions. के भन्छ अब यसलाई वर्गीकरणहरू यिनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले पुरै नाश गर्नुपर्छ त हटाउन सक्नुपर्छ. Forget gender.
Sometimes you are supposed to visualize yourself as animals, like a horse, like a pig. Et donc là, on parle même अब pas यो du लिङ्ग genre, mais भेदको त कुरै parfois vous êtes छोडिदिउँ हामीले कहिलेकाहीँ obligé de आफूहरूलाई vous visualiser जनावरको comme des रूपमा animaux, पशुको रूपमा नि comme भावना des गर्नुपर्छ कहिले cochons. घोडाको रूपमा कहिले सुँगुरको रूपमा Like if you really want to seriously practice Manjushri, for instance, you have to visualize yourself as a turtle. Et par exemple, si vous voulez यदि vraiment तपाईँले pratiquer साँच्चीकै मञ्जुश्रीको Manjushri, alors vous devez vous गहन visualiser अभ्यास comme गर्न une चाहनुहुन्छ tortue. भने तपाईँले आफूलाई कछुवाको रूपमा भावना गर्नुपर्ने हुनसक्छ And then, even if you want to go even more deeper, you are not even a turtle, you are just a letter D. Et si vous voulez अनि même त्योभन्दा नि अझ approfondir la गहन pratique, रूपमा vous n'êtes भावना même गर्न pas चाहनुहुन्छ une भने tortue, तपाईँले vous êtes juste la कछुवाको lettre रूपमा पनि D. आफूलाई भावना गर्न पाउनुहुन्न मात्र एउटा धी भन्ने बीज मन्त्रमा आफूलाई सीमित राख्ने हो And then if you want to go even more, even the letter D is deconstructed. Et si vous voulez अनि même aller encore plus त्योभन्दा loin, नि même अझ la गहन lettre D अवस्थामा va जान être, चाहनुहुन्छ भने va त्यो être धीलाई पनि तपाईँले déconstruite. पुरै तिरोहित बनाएर त्यसलाई पनि पुरै सकाएर तपाईँ खालीपनमा रहनुपर्छ So this is how the path as a characteristic less is taught. Et c'est comme ça que la र voie यो जुन चाहिँ non dotée de अनियमितता अथवा caractéristiques सङ्केतबाट est पर अथवा enseignée. सङ्केत रहितताको उपदेश चाहिँ यसरी दिइन्छ बौद्ध परम्परामा Okay, but on the more practical level, Mais à un niveau तर अब plus व्यावहारिक pratique, तहमा कुरा गर्नुपर्दा how do we apply this on our most practical for the especially for the beginner? comment अब on यो peut appliquer आधिकारिक ça अथवा et भर्खर surtout सुरुमा अभ्यास là, en ce qui गर्नेहरूले चाहिँ concerne यसलाई les कसरी débutants. व्यावहारिक तहमा उतार्न सक्छौँ त The classic Buddha's upaya, the method, is don't dwell on the past, don't dwell in the future. Donc, un भगवान बुद्धको एकदमै अब यो शास्त्रीय अथवा upayas मौलिक उपदेश classiques du योसँग Bouddha, सम्बन्धित une के छ त méthode, c'est de भन्दाखेरि dire भूतकालमा पनि n'allez pas ni dans le नरहनुहोस् र passé, वर्तमानमा ni पनि dans le futur. नअड्किनुहोस् Because past is a language, past is a symbol, past is a characteristic, future also. Parce que le भूतकाल passé र भविष्यकाल est दुईटै un नै langage, भाषा est une सङ्केत caractéristique, est un सम्बन्धित भएकोले symbole, et त्यो tout comme le futur. चाहिँ द्वैत प्रतिभा This moment C'est ce यो moment. क्षण is the closest thing that is beyond any of the Et characteristics. c'est ce moment यो présent वर्तमान नै qui est la सम्पूर्ण chose qui se rapproche लक्षणहरूबाट plus पर de अथवा cet état निमित्तबाट sans पर caractéristique. कुरा हो Now, when I say this, again, many of you may be fishing for some very exotic this moment. Et quand je vous dis ça, अब यो मैले je sais que भन्दा la भन्दै plupart पनि d'entre vous, तपाईँहरू vous essayez de कतिजनालाई chercher quelque chose चाहिँ d'exotique यो à ce वर्तमानमै moment-là. कुनै एउटा एकदम भव्य अर्कै किसिमको यो क्षणको लालसा हुनसक्छ And I'm not saying any of this exotic this Et moment. pourtant, je ne suis र pas en यो train de dire qu'il y क्षणमा a quoi कुनै que ce पनि soit त्यस्तो कुनै d'exotique एकदम dans अद्वितीय cet अथवा instant. भव्य क्षण छैन When surely you are there, I'm here. Et donc, bien अब sûr, vous êtes là, je suis là. तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ म यहाँ हुनुहुन्छ यो त वास्तविकतै हो You exist, sort of. I exist, En sort quelque of. sorte, vous तपाईँ पनि एक existez, moi हिसाबले aussi. अस्तित्वमा हुनुहुन्छ म पनि एक हिसाबले अस्तित्वमा छु भन्नु पर्ला You feel, you hear, Vous तपाईँले ressentez des पनि choses, vous महसुस entendez. गर्नुहुन्छ तपाईँले पनि सुन्नुहुन्छ to be just simply aware of this. Juste être र conscient de यसको cela. यो क्षणको निष्पट होसपूर्णता अथवा जागरुकता Just to be aware of this moment. Simplement être conscient de ce क्षणको moment-là. कोरा होस I mean, what a gift from the Buddha. Quel यो cadeau भगवान du बुद्धको Bouddha. एकदमै अचम्मको सौगात हो हामीलाई उपहार हो I mean, look, this moment is actually the only thing you have. Et regardez bien, parce एक्चुअली यसो qu'en निहालेर réalité, ce हेर्नु moment, त c'est हामीसँग vraiment भएको la seule एउटै chose कुरा que vous भनेको ayez. यही क्षण मात्रै होइन र The past is gone. It's not never ever going to come Le back. passé est déjà parti, il ne भूतकाल अथवा reviendra अतीत त absolument गइसक्यो jamais. त्यो कहिले पनि फर्किनेवालै छैन है The future is not yet Et here. le futur n'est pas encore भविष्य arrivé. अहिलेसम्म यहाँ आएको पनि छैन अहिले आइपुगेको छैन The only thing that you have is this moment. I mean, for now.
Et la seule chose que vous अहिलेको लागि avez, c'est ce हामीसँग moment. भएको एउटै कुरा के हो त भन्दाखेरि यो क्षण मात्रै हो. Buddha is just saying, just appreciate this. Et le Bouddha a juste भगवान dit, बुद्धले भन्नु appréciez खोजेको एउटै cela. कुरा के हो त भन्दाखेरि यसलाई सराहना गरौँ. This is, by the way, just one of the 100,000 other methods. Et entre अब यो nous, चाहिँ c'est une des milliers de लाखौं méthodes. अन्य उपायहरूमा एउटा मात्रै उपाय हो. I'm not saying that, I haven't told you, I'm not telling you that this moment is good, bad, flat, round, square. No signs, no symbols, no characteristics. Et je suis pas en train de vous dire que ce moment est bien, mauvais, rond, carré, खेप्चो छ, de telle गोलो छ अथवा manière. Il n'y a pas de चारकुने signe, छ pas de भनेर symbole, pas de भनिरहेको छैन यहाँ. caractéristique. कुनै पनि किसिमको लक्षण छैन यसको. And this is what you need to just, what do you call it? This is what you need to grab, hold, get acquainted with again and again. Et c'est र ça यही कुरा नै que vous avez तपाईहरुले besoin, बारम्बार à quoi vous बारम्बार avez besoin de पक्रिनु vous पर्ने, बुझ्नु accrocher, पर्ने र vous avez आफूले besoin de आफूलाई अभ्यस्त garder, बनाउनु de पर्ने vous कुरा. habituer. What it does is then it burns hope, अनि यसले Et qu'est-ce qui यसले va se के गर्छ passer? त C'est que भन्दाखेरि ça यसले va हामीहरुको brûler l'espoir. आशा र हाम्रो डरलाई चाहिँ जलाउन थाल्छ. it burns references. Et ça va यसले brûler nos विभिन्न références. किसिमका हामीहरुको धारणा अथवा निमित्तहरूलाई जलाउन थाल्छ. This is, for instance, like one of the most vicious challenge we have, especially in our modern life, is depression. Par exemple, अहिलेको यो une des आधुनिक difficultés les plus vicieuses, pernicieuses समयमा qu'on peut अथवा avoir जीवनमा सबभन्दा dans काली ce लाग्दो monde moderne, हाम्रो c'est la dépression. समस्या भनेको चाहिँ यो मानसिक डिप्रेसन अथवा डिप्रेसन हो. I think, and one of the main ingredient of the depression is this fear that something terrible is going to happen. Et je crois qu'un des éléments les plus importants de cette dépression, c'est cette peur que quelque chose de terrible, d'effroyable va arriver. तत्त्व भनेको चाहिँ what was that? Something terrible is about एकदमै going to happen to you. Nous arriver. डरलाग्दो कुरा होला कि मलाई भन्ने भय हो, त्रास हो. Or that you are not worthy. Ou qu'on अथवा ne म के mérite कुराको लागि pas, पनि qu'on लायक est- छैन. All this comes from references. Et tout ça त्यो सबै vient कुरा चाहिँ de यही nos références. निमित्तहरूबाट अथवा धारणाहरूबाट आउँछ. Isn't it? Like the modernity, the problem of the modernity. Et ça, c'est le problème de उदाहरणको la लागि modernité. आधुनिकतावाद अथवा आधुनिकता यसको समस्या. I'm very sure the servant of the Alexander the Great never thought that, I can be like him. Et je ne pense pas मलाई que के लाग्छ त les भन्दाखेरि serviteurs अलेक्जेन्डर d'Alexandre अथवा se अलेक्जेन्डर disaient, जुन un महान jour, je अलेक्जेन्डर pourrais हुनुहुन्थ्यो devenir comme lui. उहाँको नोकरहरूले चाहिँ म यिनी जस्तै हुन्छु भनेर कहिले पनि सोचेको थिएन होला. He's a human, I'm a human. I can try, I can be like him. Donc c'est un humain, je suis un ऊ पनि humain, je peux मनुष्य हो, म पनि essayer, मनुष्य हो, et je ऊ peux पनि être comme- लड्न फाइट. Yeah, I can be like him. म ऊ जस्तो हुन सक्छु. So he was happy just bringing the grapes for Alexander the Great. En fait, र ces serviteurs étaient अलेक्जेन्डरको juste लागि contents de pouvoir le अङ्गुर servir, ल्याएर de lui उहाँलाई amener des raisins. दिनुमा ऊ खुसी थियो, सन्तुष्ट थियो. But now we have a reference called equality. Everybody is equal, individual, Everybody is equal. Okay, now we can do this, do that, and it gives so much. And then when that doesn't work, something must be wrong because the God we have already negated. We cannot blame God.
Mais अब maintenant, on a cette अहिलेको धारणा référence अथवा qui हामीहरूको est निमित्त कस्तो छ l'égalité, त donc on est भन्दाखेरि tous संसारमा pareils, सबै donc बराबर हो je त्यसले peux गर्दा faire हामी जे पनि ceci, गर्न सक्छौँ भन्ने cela. सोच्छौँ Et quand अनि हामीले सोचेको ça जस्तो marche pas, en नभइदिइसकेपछि fait, चाहिँ नि हामीहरूको on est टाउको mal et on दुखे peut हुन्छ même किन त pas भन्दा अब mettre त्यसलाई la faute समाधान sur गर्नलाई Dieu, puisqu'on a जुन चाहिँ nié अब देवी les देवताको धारणा décisions छ de त्यसलाई Dieu, हामीले donc कुन on se बेलामै अब retrouve... लत्याइसकेका छौँ होइन You know, I look good because I just went to South Korea. आई डु गुड I बिकज look okay. I look as good as him because I just fixed myself in South Korea. Et donc, म je ठिकै suis देखिन्छु किन beau भन्दाखेरि parce मैले que je suis आफूलाई allé अब me faire साउथ refaire कोरियामा en गएर Corée du अब Sud. ठिकठाक बनाइसकेका छु You know, how come she or he gets everything and I don't? You know, all that. Comment cette र personne peut avoir tout ऊ म ça जस्तै et भए pas पनि moi? उसले सबै Comment कुरा c'est पाउँछ मैले possible किन ça? पाउँदैन भन्ने कुरा यी सबै धारणाहरू नै हाम्रो समस्या हो There's so many references. You know, I just went to, Dengboche, and, like urban life. Kathmandu, urban, that's a reference, right? Et अब on a यसमा धेरै tellement de उदाहरण दिन références. सकिन्छ अब म Par exemple, हालसालै j'étais dans तेङ्बोचे un गएको endroit थिएँ à र Katmandou एउटा où सहरीय là, c'est जीवन une चाहिँ ville अब एक très किसिमको त्यो urbaine qui est pleine तुलनात्मक de धारणा हुन références. सक्छ त्यहाँको मान्छेलाई So if you are in the urban situation, Donc, si vous êtes यदि dans une तपाईँ situation सहरीय urbaine, वातावरण हुनुहुन्छ अथवा सहरमा हुनुहुन्छ भने it's embarrassing to sleep around 9 p.m. et en fait, c'est très अब embarrassant si on सहरमा va se बसेको coucher मान्छेलाई à 9 9 बजे heures, सुत्नु à भनेको 21 एउटा heures. लज्जास्पद कुरा हुनसक्छ No matter what, you have to sleep like midnight because you have to sort of, you're an urban member, you have to sort of be awake till like at least midnight. तपाईँ Otherwise, you'll be laughed at. Et donc, il faut र au moins se तपाईँ coucher à सहरको minuit, puisqu'on est एउटा dans un बासिन्दा अथवा environnement सदस्य हुनु urbain. भएकोले Donc, गर्दा parce que si तपाईँले on se जसरी couche पनि trop आफूलाई tôt, on va, 12 बजेसम्म तन्काएर on त्यति va बेला se foutre de सुत्नु nous. ठिक हुन्छ नत्र यदि तपाईँ faut qu'on त्योभन्दा tienne au चाँडै moins सुत्नु jusqu'à भने चाहिँ minuit. मान्छेहरूले तपाईँलाई हेरेर हाँस्न सक्छन् तपाईँको खिल्ली उडाउन सक्छन् Yes. So, yes, now there will be really incredible different varieties of so-called depression, anxiety. All this is like coming, right? र त्यसले Et गर्दा une très अहिले विभिन्न grande प्रकारका यो variété मनोविषाद de त्रास डर dépression, जस्ता de कुराहरू crises चाहिँ हामीले d'angoisse qui अहिले sont en train समाजमा d'arriver. देखिरहेका छौँ So, referencelessness, signless, characteristic-less is what we need to really at least contemplate a little bit, because that will liberate you a little bit. Et donc, र cet त्यसले état गर्दा यो sans référence, धारणा sans signe, sans रहितता अथवा धारणाबाट caractéristique, c'est मुक्त quelque chose qu'on अवस्था doit au moins contempler अनियमितता parce que ça अथवा va निमित्त नभएको pouvoir nous सङ्केत नभएको libérer. अवस्था अथवा लक्षण रहितता जस्ता कुराहरूमा हामीले चिन्तन मनन गर्न धेरै आवश्यक छ Okay, I'm going to just do the third one, and then I will let you, because there's been a lot of questions, so I will try to answer some of those. Donc maintenant, je vais aborder अब la troisième हामी porte de la तेस्रो libération, comme ça मुक्तिको laissera le temps द्वारमा pour प्रवेश que गर्न vous जाँदैछु posiez des तर questions, parce qu'il y en avait त्यसमा beaucoup. छोटै म कुरा गर्छु अनि धेरै प्रश्नहरू हुन सक्छन् त्यसको जवाफ पनि म दिन्छु And then we will have the break. After break, there has been request of taking the refuge in the Bodhisattva vow, which we will do. Donc ensuite, अनि on va त्यसपछि faire une हामीले pause, et छोटो après la विश्राम pause, लिन्छौँ अनि comme il y a त्यो eu des requêtes विश्रामपछि de अब refuge et de एक दुईवटा Bodhisattva, यहाँ अनुरोध आएको on fera ça. छ कि हामीहरूलाई शरणगमन र बोधिसत्व सम्बर दिनुहोस् भनेर अनि त्यो पनि हामीले गर्नेछौँ Those who don't want to take refuge in the Bodhisattva vow, after the break, they can go home. Donc ceux qui ne अब souhaitent pas prendre जसलाई refuge सम्बर ni prendre des शरणगमन र Bodhisattva, बोधिसत्व vous सम्बर pouvez लिने rentrer chez इच्छा vous. छैन तपाईँहरू ब्रेकपछि चाहिँ घर फर्किन सक्नुहुन्छ But if you want to just stay here and just observe what these Buddhists are doing, you are very welcome. Par contre, si vous voulez rester là तर pour regarder ce que तपाईँलाई font यो ces बौद्धहरूले bouddhistes, के गर्दा रहेछन् vous भनेर êtes यस्तो tout à चाख fait les लागेर हेर्न bienvenus. मन लाग्यो भने तपाईँहरू बस्न पनि सक्नुहुन्छ And then also there's a request of few transmissions of kathmandu and stuff like that, all the Buddhist stuff. Et ensuite, अनि il y a eu des एक दुईवटा requêtes आगमको sur पनि certaines अनुरोध आएको छ transmissions बौद्ध अब यो d'un बौद्ध truc कुराहरू bouddhiste. हो अनि यी कुराहरू पनि हुनेछन् पछि Okay. Chö tamjene member mi bi rangjin jite langwa to toro me ba wo. Okay. So the fruit
the result is beyond aspiration. Et donc le fruit, le résultat est au-delà de l'aspiration. शास्त्रीय अथवा यो प्राविधिक भाषामा चाहिँ अप्रणीयता अथवा अप्रणीयत पनि भन्छ भनेको मतलब इच्छा रहितता अथवा प्रणिधान रहितता अथवा हामीहरूको संकल्प रहितता हो त्यो. Now of course again, Buddhists have so many aspirations. Et bien sûr, encore une fois, les bouddhistes ont énormément d'aspirations. संकल्प प्रणिधानहरू हुन्छन् नै. All these are like a contradictory. Et tout ça, en fait, अब c'est एक très हिसाबले contradictoire, एक n'est-ce आपसमा pas? विरोधाभासीपूर्ण छन्. This is where you need to really learn generally the Indian wisdom tradition, which is so much to do with the Et paradoxes. c'est là où c'est intéressant अनि d'apprendre यसकै la लागि हामीले tradition चाहिँ indienne de la बौद्ध sagesse, où tout a à प्रज्ञाको voir avec le परम्परालाई paradoxe. हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ जसमा चाहिँ यस्ता किसिमका विरोधाभासपूर्ण कुराहरूलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा व्यक्त अथवा बुझाइएको हुन्छ. We say like, like Buddha said, I have no form. I mean, those who see me as a form, they have a wrong view. Yet we have so many Buddha statues. We talk about 32 major marks, so on and so forth. अब Et donc, par उदाहरणको लागि exemple, भगवान le Bouddha बुद्धले a dit, एक ठाउँमा चाहिँ je n'ai pas de जसले forme, मलाई ceux qui me रूपको रूपमा voient comme une अथवा forme शरीर ont रूपमा देख्छ pu उनीहरूले faire चाहिँ मलाई गलत Et रूपमा pourtant, बुझ्छन् on a plein de भन्नुभएको छ. statues, तर त्यो on a हुनाहुँदै des पनि marques majeures. यत्र तत्र हामीहरूले भगवान बुद्धको प्रतिमाहरू देख्छौँ र भगवान बुद्धको 32 लक्षण अनुव्यञ्जनहरू आदि इत्यादि कुरा पनि गर्छौँ. Here again, result beyond aspiration. Yet we have so many aspirations, and I personally would encourage you to do aspiration. Et donc, encore une fois, le र यहाँ résultat पनि भन्न चाहिँ est au-delà फल भनेको des aspirations. Et pourtant, nous, on a plein d'aspirations. Et moi, personnellement, je vais vous encourager aussi à formuler des हामीले aspirations. धेरै प्रणिधान गर्छौँ र म व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूलाई प्रणिधान गर्न चाहिँ प्रोत्साहित गर्छु. At least aspiration, understand the three doors of liberty. Excusez-moi, ça a coupé, mais je crois कम्तीमा qu'au पनि moins l'aspiration d'arriver à मुक्तिका यी comprendre तीन les trois portes de la द्वारहरूलाई libération. बुझ्ने प्रणिधान अथवा सङ्कल्प गर्न जरुरी छ. Now, but why we talk about Devumamba? Why do we say this, that liberation is, the fruit is beyond aspiration? Et pourquoi अब on हामीले dit que यहाँ le fruit est au-delà फल des चाहिँ aspirations? Excusez-moi, je suis en train de perdre. प्रणिधान रहित हुन्छ किन भनिरहेका छौँ त. This statement can be explained in many Et different cette ways. affirmation peut अब être यो encore une fois फल expliquée sous différents प्रणिधानहरूभन्दा niveaux. पर भन्ने जुन चाहिँ उक्ति छ यसलाई विभिन्न तहहरूमा व्याख्या गर्न सकिन्छ. I think begin with a very classic Buddhist example. Probably that will help you to understand. Donc on va commencer avec un exemple bouddhiste classique qui va certainement vous aider à comprendre. बौद्ध उदाहरणबाट लाई लिन्छौँ यसले तपाईहरुलाई बुझ्न अलि मद्दत पर्यो होला के. If you are having a nightmare, si vous faites un cauchemar, तपाईहरुले एउटा दुःख स्वप्न देख्नुभयो. Okay, you are sleeping in a very nice vous dormez dans une एउटा राम्रो chambre très agréable. कोठामा सुतिराख्नु भएको छ. But you are having a Mais nightmare. vous faites un cauchemar. तपाईलाई तर पनि एउटा डरलाग्दो अथवा दुःखद सपना तपाईले देख्नुभयो भने And you are frantic. J'ai pas entendu ce तपाई qu'il a dit. एकदमै pardon. आत्तिनु भयो. You really aspire to get out of that situation. Et vous allez aspirer à तपाईलाई त्यो sortir परिस्थितिबाट de cette बाहिर situation. निक्लिन एकदमै हतार भइसकेको छ. Okay? Just make note. You are just sleeping on a very nice bed. Donc, र तपाईले के कुरा फेरि notez bien, यहाँ vous dormez स्मरण dans un गर्नुपर्छ हेरेर lit राख्नुपर्छ भने très तपाईँ एकदम agréable. आरामदायक ओछ्यानमा सुतिराख्नु भएको छ है. Whether you aspire to get out of that situation or not, you are already free. Que vous aspiriez à vous sortir de तपाईँ त्यो cette दुःखद situation सपनाको effrayante अवस्थाबाट बाहिर ou pas, निक्लिन en fait, चाहनु vous भए êtes तापनि déjà नभए तापनि libre. तपाईँ एक हिसाबले अगाडि नै मुक्त भइसक्नु भएको अवस्थामै हुनुहुन्छ. And then, I don't know, somebody, because you are wailing and you are yelling and maybe somebody just
wake you up. Et je sais pas, peut-être parce que र vous अब hurlez, कसैले vous तपाईलाई चाहिँ criez, त्यो सपनामा peut-être que रुँदै quelqu'un va venir कराउँदै vous गरेको réveiller. देख्यो भने चाहिँ उसले तपाईलाई उठाउन प्रयत्न गर्छ, उठाउँछ। And that somebody's act of waking you up, be it pinching you or, cold bucket of water, whatever, wake you Et up. donc peut-être que र la त्यो manière avec laquelle la personne उठाउने va vous मान्छेले réveiller, तपाईलाई ça va être en उठाउनको vous लागि प्रयोग pinçant, गर्ने en vous उपायमा jetant un seau d'eau सायद sur la तपाईलाई tête, चिमोटेर ça va vous उठाउन सक्छ réveiller. अथवा एक बाल्टिन पानीले तपाईलाई के जगाउन पनि सक्छ। It helped you release from that terrible Et situation. ça va vous अब aider जसरी à vous जुन उपाय sortir de प्रयोग cette गर्दा पनि situation त्यसले तपाईँलाई terrible, सहयोग à पुर्याएकै vous हुन्छ, soulager. तपाईँलाई त्यो डरलाग्दो अवस्थाबाट अथवा भयानक परिस्थितिबाट चाहिँ तपाईँलाई बाहिर निकाल्छ। You might even thank this person for waking you Et up. vous allez र तपाईँले त्यो éventuellement même व्यक्तिलाई remercier la त्यस्तो personne भयानक de vous परिस्थितिबाट avoir बाहिर réveillé. निकालेकोमा धन्यवाद पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ। Again, make note whether he pinch you or cold bucket of water or wake you up or not. The result, you are in that room, peacefully. Comfortably there. You are never in that situation. Et donc encore, फेरि prenez note स्मरणीय ici, c'est que तपाईँले quelle que याद soit la राख्ने manière कुरा avec के हो त laquelle il vous a भन्दाखेरि réveillé, que ce soit en vous त्यो व्यक्तिले pinçant, तपाईँलाई en vous चिमोटेर jetant अथवा un seau d'eau sur la चिसो tête, पानीले le résultat छ्यापेर c'est que उठाए vous तापनि êtes dans cette जे chambre गरेर पनि उठाए पनि agréable, नउठाए dans पनि une तपाईँ situation confortable, अहिले et पनि que vous त्यही n'avez jamais आरामदायक été dans cette ओछ्यानमै situation हुनुहुन्छ। effrayante. This is an absolutely important to understand the word Buddha, awaken. Because many times we think that we are so, muddled here, so wrong, so bad, and then if we work so hard, one day we will be awakened. This is not really a Buddhist way of understanding the awakened. Et donc अब c'est pour ça यो que c'est पृष्ठभूमिमा crucial यो de परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ comprendre हामीले बुद्ध que अथवा Bouddha, जाग्नु भन्ने c'est donc शब्दलाई बुझ्न l'éveillé. जरुरी छ। Parce que nous, on a हाम्रो tendance धारणा à के dire, हुन्छ भने ah, je अहिले suis une हामी mauvaise एकदम संसारमा personne, je suis फसेको nul, je suis विभिन्न tout किसिमको mal, et झमेलामा qu'il va me अड्केको falloir travailler एकदिन énormément अभ्यास pour गर्दै un गएर jour कालान्तरमा arriver à एक m'éveiller. समयमा गएर En fait, si बुद्ध vous pensez हुन्छौँ ça, भन्ने c'est pas धारणा du tout une manière हामीले राखेका हुन्छौँ। bouddhiste तर de बौद्ध comprendre ce que c'est परम्परामा que बुद्ध l'éveil. अथवा जाग्नु शब्दको अर्थ यही हिसाबले लाग्दैन। Okay, so broadly speaking, this is what we are talking Et here. donc, en gros, de manière assez vague et large, c'est à peu près de ça qu'on parle सामान्य रूपमा maintenant. भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको विषयमा कुरा गरेका हौँ। Because if the Buddhahood or the state of the Buddha can be achieved through aspiration, then you are making the state of the Buddha compounded phenomena. Parce que si cette bouddhéité, cet état de Bouddha peut être accompli à travers l'aspiration, alors vous faites de cet état, cette bouddhéité quelque chose de composé. संस्कृत धर्म अथवा बनाइएको कुनै कुरा बनाउँछ नि, बनाएर बनाएको धर्मको रूपमा मानेको हुन्छ। Then your state of the Buddha will have expiry date. Et donc votre état de Bouddha, votre bouddhéité aura une date de péremption. अब सकिने मिति पनि हुन्छ, एक्सपायरी डेट पनि हुन्छ। Then one day, after many eons of becoming Buddha, you will again go back all, from square A. Right? Et donc après des éons, vous aurez été dans un état de bouddhéité, vous allez revenir en fait à la case A. Okay, so this is basically, what do you call it, something that you need to know. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir. सार रूपमा यही कुरा सामान्यतः तपाईले बुझ्नुपर्छ। Okay, and it is because of this in the Tantra they talk about how you are the deity. Et c'est de ce fait que dans le Tantra, il est dit que vous êtes la divinité. तपाईं किन इष्टदेव हो भनेर व्याख्या गरिन्छ। That's why, okay, and this is really, really important, okay. For instance, since we are going to do the refuge later, so let's talk about the refuge. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et là, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ किन भन्दाखेरि अब एकछिनमा हामी फेरि यो ब्रेकपछि शरणगमनको कार्यक्रम पनि गर्छौं र एकछिन चाहिँ अब हामी शरणगमनको विषयमा चर्चा गर्छौं। So when we take refuge to Buddha, when we take refuge, you should take refuge to something
that will not fail you. Donc, quand vous prenez refuge, ou dans le Bouddha, par exemple, vous devez prendre, enfin, quand on prend refuge, on doit prendre refuge en quelque chose qui ne va pas nous tromper. If there's a rain and you take refuge under the umbrella. Donc, s'il pleut, vous prenez refuge dans le But the umbrella has lots of holes, then it doesn't mais work. ce parapluie a plein de trous et du coup, ça ne marchera pas. Right? So, whoever you are taking refuge should really be trustable, should give you the full service. Et donc, quel que soit votre objet de refuge, vous devez pouvoir lui faire confiance et vous donner un service impeccable, en quelque sorte. त्यो एकदमै भरपर्दो हुनुपर्छ र तपाईलाई पुरै तपाईको पैसा वसुल हुनुपर्छ. So this is why in the refuge, like when we say Buddham Sharanam Gacchami, when we talk about that, especially in the Mahayana, the only trustable, unfailing protector is the innate Buddha. त्यसले गर्दा यसरी हामीले शरणगमन गर्ने बेलामा बुद्धम शरणम भनेर लिए तापनि सबभन्दा हामीलाई धोका नदिने विश्वसनीय शरण स्थान भनेको चाहिँ हामी भित्रको अन्तर्बुद्ध हो. That is your base. Et c'est ça. त्यो चाहिँ हामीहरुको आधार हो. I mean, let's say, okay, going back to our example, the nightmare. Si on revient à l'exemple du cauchemar. त्यो दुःख सपनाको उदाहरणमा एकचोटी जाउँ. The bucket of water worked, and the real reason why it worked is because why it really worked is because you are actually in the room sleeping. If you are actually in the jungle with the spiders eating you, it doesn't matter what kind of bucket of water, it doesn't matter, you will still suffer. Et donc, si on prend l'exemple du rêve, le seau d'eau qui vous réveille marche. Mais la raison pour laquelle ça marche, c'est parce qu'en réalité, vous êtes dans votre chambre bien confortable en train de dormir. Par contre, si vous étiez réellement dans la forêt entourée d'araignées, on aurait beau vous jeter un seau d'eau sur la tête, ça ne marcherait pas. भयानक किसिमको माकुराहरू भएको ठाउँमा सुत्नु भएको भए त्यो पानीले पनि काम गर्दिन्थ्यो, तपाईले दुःख पाउनु नै हुन्थ्यो. But because, I know you are going through all the agony, all the problem, but fundamentally you are there sleeping, so it gives you the hope. Donc je sais que त्यो सपना अन्तर्गत तपाईले जस्तै दुःख पाउनु भए पनि जस्तै पीडादायक अवस्था भए तापनि यथार्थ के हो त भन्दाखेरि तपाई आरामले आफ्नो कोठाभित्रको ओछ्यानमा सुतिराख्नु भएको छ, त्यति हो. So taking refuge to the Buddha is unfailing. त्यसले गर्दाखेरि भगवान बुद्धमा शरणगमन जानु चाहिँ त्यसले कहिले पनि हामीहरूलाई धोका दिदैन. This is basically the part of this the third liberation I'm talking about. अनि यो अहिले मैले कुरा गरिरहेको कुरा चाहिँ तेस्रो मुक्ति अथवा तेस्रो मुक्तिको द्वारसँग सम्बन्धित छ. I think since they are related, I think I have talked about the three doors of liberation kind of briefly. Et donc, comme elles sont toutes liées entre elles, je pense que j'ai abordé les trois ports de la libération de manière assez brève. Okay. Shall we do some questions? And I think we will do a little bit longer question and answer. And then we take the break, and then we do the order. Donc on va faire une session de questions-réponses un petit peu plus longue que d'habitude, et ensuite on fera la pause. So Rinpoche will take some questions. Donc Rinpoche va répondre à quelques questions. So like yesterday, we have standing microphones on both sides of the room. Okay. Please keep your questions related to the teachings. Donc, Thank s'il you. vous plaît, gardez vos questions en lien avec les enseignements. Merci. Okay. Please. Wait, the mic is off. Can you turn it on? It hasn't worked yet.
You want to do it there? Okay. Tashidale Rinpoche. Rinpoche, I came with like 3 shawls, thermals, and I was just hoping that it doesn't rain. And I saw the look of Karma Chimpa. I came in shorts, and I could like see and hear blasphemy, you know. So in my head, there is this constant contradiction, you know, like you're saying, look at the hand and then go beyond, you know, come here. Like, I mean, I was just thinking it'll be so nice to be in underwears here, just so comfortable, you know, like so present. And then I have to dress up, you know. But then I like this internal contradiction, you know. So, I mean, what you're saying is so succulent and so nice, you know, to chew on it. And then in my head, I'm going back to yesterday. You're like showing your thumb, you know. And I'm like, there are babies here, and I'm thinking, I want to nibble on your thumb, you know. But then yesterday I stepped out for water, and then there are all these people lined up, you know. There's so much bhakti and devotion. So my small question is, like, how can we imbibe this devotion with like renunciation or detachment? Like, how can I bring you in and keep you away? Or like, keep you so far away? Like, you know, like go beyond, I don't know, aspiration, like you say. So that's my first question, and I had a confusion yesterday. You said, Baudhanath, there is this Vajra Yogini meeting, this beautiful, elegant Lama. Okay. So I'm thinking this outrageous Vajra Yogini is coming and wanting to meet this very elegant Lama. But why does she give up? Like, where is this outrageousness of outrageousness? She's suddenly like becoming so elegant and giving up. Why didn't she come back? You know? Okay. I hardly got what he said, but I'll try to summarize. Yeah. Yeah. So the first question is how to imbibe devotion, right? And then renunciation, and then those kind of stuff. And then how to keep Rinpoche, how to kick out Rinpoche out of your life so that you are free from him. En gros, So पहिलो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि मैले उहाँले अगाडि भनेको पृष्ठभूमि चाहिँ भन्दिनँ किनभने मैले बुझिनँ पनि साँच्चीकै हाम्रो जीवनमा यो भक्तिलाई कसरी हामीले आफूले सोच्ने कसरी आफ्नो मनलाई भक्तिले सिञ्चित गर्ने र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ भक्तिका साथसाथै यो अब यो नैष्कर्म्य सङ्कल्प त्याग्ने भावना हुन्छ नि यो विभिन्न बन्धनहरूलाई त्याग्ने भावनालाई आफूमा ल्याएर त्यो भक्तिको माध्यमबाट नै कसरी रिम्पोचेको प्रतिको ग्राहबाट पनि मुक्त हुने यो पहिलो प्रश्न भयो र दोस्रो प्रश्न चाहिँ अब अस्ति रिम्पोचेले चाहिँ एकजना वज्रगिनीको अभ्यासीले चाहिँ वज्रगिनीको अभ्यास गरेको क्रममा चाहिँ वज्रगिनीले आएर अँगाल्न मार्नुभयो र उसले ढकेलिसकेपछि उहाँ त अब भिक्षु हुनुहुन्थ्यो ढकेलिसकेपछि चाहिँ फेरि पनि वज्रगिनीले बारम्बार आएर किन त्यो उहाँलाई अँगाल्न मार्ने प्रयत्न गर्नु भने यो किन त्यसरी काम गर्दैन भन्ने प्रश्न हो मैले एकदम राम्रो ट्रान्सलेसन गरेँ यसको लागि चाहिँ क्षमा चाहन्छु Okay. Because we are talking about the devotion, it somehow reminded me to speak a little bit. Probably it's not really an answer for you, but nevertheless I will speak. Donc, parce que अब यो प्रश्नको जवाफ म दिन्छु तर तपाईको प्रश्नको जवाफ नहुन सक्छ त्यही पनि म बोल्न चाहिँ बोल्छु pour répondre à cette question mais je vais quand même en parler. Okay, first, I don't know whether the Depa, devotion is the right translation, but anyway, all the great masters of the past, they said the devotion is like a very noble wealth. It's not that easy to get. अब बौद्ध परम्परामा अब धेपालाई हामीले श्रद्धा पनि भन्छौँ श्रद्धालाई साँच्चीकै भक्ति भनेर अनुवाद गर्न कतिसम्म सही हुन्छ मलाई थाहा छैन तर बौद्ध परम्पराका गुरुहरूले चाहिँ श्रद्धा जुन छ अथवा भक्ति नै भनौँ यहाँले भक्ति चाहिँ एकदमै आर्य सम्पत्ति हो आर्य निधि हो जसलाई प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ सहिलोसँग पाइँदैन भन्नुभएको छ I always say this when asked Chandrakirti, to whom should we teach Shunyata? अनि मैले सामान्यतया चन्द्रकितलाई के प्रश्न गर्छु त भन्दाखेरि शून्यताको उपदेश कसलाई दिन लायक छ He never said
to the Harvard Il graduate. disait jamais aux diplômés de Harvard. उहाँले सुनिताको उपदेश कहिले पनि हार्वर्ड ग्रेजुएटलाई दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छैन. He said, you know, the moment the word shunyata is mentioned, you know, there's a goosebump and there's a tears in their eyes without any reason. These guys will understand the shunyata. This is what he said. Et donc, ce qu'il disait, c'est सुनिताको उपदेश qu'au कस्तो moment où व्यक्तिलाई on दिनुपर्छ prononçait त le भन्दाखेरि mot सुन्यता shunyata, भन्ने la शब्द personne सुन्ने qui va बित्तिकै avoir उनीहरूको शरीरमा एक le किसिमको त्यो poil लोमहर्ष qui भन्छ क्या se la chair de शरीरको poule रौँ ou- ठाडो et हुने les larmes आँखाबाट d'émotion तरर qui आँसु coulent बग्ने des yeux, त्यस्तो ça, व्यक्तिहरू ces चाहिँ personnes-là, साँच्चीकै ces personnes-là सुन्यताको seront capables de उपदेशको comprendre ce que सुन्ने shunyata. पात्रहरू हुन् भन्नु. And let's talk about methodology, because this is a really important one. And I think this is something that I want to share this with the young Nepalis. Alors, on va parler de la méthodologie, parce que ça, c'est un point qui est très important. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de partager avec les jeunes पद्धतिको विषयमा चर्चा Népalais. गरौँ. किन भन्दाखेरि मलाई हाम्रो नेपालका युवा पुस्ताहरूलाई यसले धेरै फाइदा पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई. Um, Basically, we are talking about upaya, right? Donc, en gros, on अब parle हामीले de la यहाँ méthodologie अब Utpaya. मैले होइन पद्धति भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ तर गुरुले यहाँ उपायलाई भन्न खोज्नु भएको रहेछ. उपायको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ. उपाय पनि एउटा पद्धति हो बाइ द वे. Among the available and the cherished methodology that we have is hearing, contemplation, and I guess analysis. अब सामान्यतया हामीहरूलाई उपलब्ध अथवा हामीहरूलाई बढी रुचिकर हामीलाई मनपर्ने किसिमको उपाय अथवा पद्धतिहरूमा चाहिँ सुतमै सुन्ने, पढ्ने, चिन्तन मनन गर्ने र अर्को चाहिँ युक्ति लगाउने, त्यसलाई अब अन्वेषण गर्ने पद्धति चाहिँ बढी प्रचलनमा पाइन्छ. Critical thinking. Pensée critique, en quelque अर्को sorte, चाहिँ je dirais. यो एक हिसाबले युक्ति प्रयोग गर्ने हैन. And I guess, yes, of course, even Buddha himself really encouraged that. You should analyze my teachings, so on and so Et forth. j'imagine même le र Bouddha भगवान lui-même बुद्धले नै encourageait cela. यसरी Il disait, यो श्रुतमय vous चिन्तामय devez, पद्धतिलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुभएको थियो र जसरी analyser ce que सुनलाई अब mes enseignements. सुनारले कसीमा जान्छन् त्यसरी नै मात्रै सत्यतालाई पनि जाँचेर स्वीकार्नु भन्नुभएको थियो. Especially in the Et beginning. surtout au début. र यो अझ प्रारम्भिक चरणमा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ. But the most important methodology is the feeling. Mais la méthodologie la plus importante सबभन्दा महत्त्वपूर्ण est ce que l'on उपाय ressent. अथवा पद्धति चाहिँ अनुभूतिको पद्धति हो अथवा अनुभूतिको पद्धति. And I think this is the part that modern people are losing. Et ça, this. je pense que c'est la partie que les personnes अहिलेको modernes जुन आधुनिक perdent. मानिसहरूले बिस्तारै गुमाउँदै गएको Non pas. पक्ष चाहिँ यही अनुभूतिको पक्ष हो. And I'm not even talking about so-called emotional intelligence. It's far, far more than that. Et là, je parle pas du tout de अब यहाँ मैले l'intelligence त्यसले émotionnelle, गर्दाखेरि ça va चाहिँ beaucoup plus loin que ça. भावनात्मक प्रज्ञाको कुरा गरिरहेको छु होइन. यहाँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरिरहेको होइन कि मैले एकदमै त्योभन्दा धेरै नै उच्च तहको प्रज्ञाको कुरा गरिरहेको छु. But it's going to be difficult to convince the modern people to invest on Ça va that. être difficile तर de अहिलेको convaincre les आधुनिक personnes modernes मान्छेहरूलाई d'investir त्यसमा dans समय ça. लगाउनको लागि हामीहरूले प्रोत्साहित गर्न अथवा उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न गाह्रो हुन्छ. Yes, this feeling, okay, call it devotion. Donc, अब यो जुन sensation, चाहिँ oui, vous अनुभूति pouvez अथवा l'appeler la भावना जस्तै dévotion. हामीले भक्ति पनि भन्न सक्छौँ. Time and again in the Buddhist history, there has been a lot of demonstration through
accounts of the life of different people. Et donc, बौद्ध परम्परामा à plein d'endroits dans l'histoire bouddhiste, अधिकांशतया il y a, गुरुहरूको जीवनबाट j'ai pas यसलाई entendu ce qu'il a dit, इङ्गित गर्ने अथवा दर्शाउने गरिएको पाइन्छ One of the greatest was Saraha. un des plus grands était तीमध्ये Saraha. एउटा महान उदाहरण चाहिँ सरपाको हो He was basically the dean of the Nalanda Donc University. c'était उहाँ चाहिँ le नालन्दा chef de विश्वविद्यालयको चाहिँ मूल उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो l'université de Nalanda. Nalanda University, wow. If you want to talk about critical thinking, those guys are like the Et quand on best. parle de pensée यदि critique, à हामीहरूले Nalanda, c'était vraiment तर्क le र meilleur. युक्तिको विषयमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नालन्दा विश्वविद्यालय भनेको त्यसमा अद्वितीय स्थान हो अद्वितीय विश्वविद्यालय हो These guys were the ones who wrote about analyzing the Buddha and analyzing this and that, and everything is analyzed and Et deconstructed. donc toutes ces personnes dans cette université de Nalanda, त्यहाँका eux qui ont écrit sur le fait उपाध्यायहरूले नै d'analyser le कसरी Bouddha, tout était बुद्धलाई पनि analysé, tout विश्लेषण était गर्ने déconstruit. कुनै पनि कुरालाई कसरी विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै टुक्र्याउँदै जाने भन्ने कुरामा एकदम विस्तृत शास्त्र लेख्नु भएको छ उहाँहरूले But Saraha never felt enough. Mais pour Sarah, तर सरलाई c'était कहिले पनि jamais त्यति गरेर suffisant. पुग्छ जस्तो लागेन And one day, as he was walking around in the street, he saw this woman who makes arrow. I think daytime she makes arrow. Nighttime, I think she's sort of a courtesan. Et donc, र une fois alors qu'il एक était दिन dans la rue, il rencontre cette नगरमा femme हिँडिरहेको qui, बेलामा चाहिँ durant la सरले एकजना journée, faisait स्त्रीलाई des भेट्नुभयो flèches, जसले et pendant la चाहिँ nuit, दिनको c'était une बेलामा चाहिँ courtisane. यो धनुषमा हान्ने बाण हुन्छ नि त्यो बाण बनाउनु हुन्थ्यो भने रातिको समय चाहिँ उहाँ नगरवधु हुनुहुन्थ्यो हामीले कहिलेकाहीँ वेश्या पनि भन्छौँ तर त्यही शब्द त नगरवधुको काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले The moment he saw her, all the years of critical thinking, deconstructions just gone. Et र à partir du जुन moment où क्षण on a उहाँले vu toutes ती ces महिलालाई années देख्नुभयो qu'il त्यो a बेलामा passé à उहाँहरूको déconstruire, वर्षौँदेखिको se sont उहाँको complètement युक्तिपूर्ण चित्त चाहिँ évanouis. त्यही बेला भत्क्यो भताभुङ्ग भयो And then he became her Il est disciple. devenu son र disciple. उहाँ तत्कालै ती स्त्रीको शिष्य बन्नुभयो Just imagine the scandal. Donc imaginez le अब scandale que ça a provoqué. तपाईँले त्यो बेलामा अब कस्तो ठुलो अब स्क्यान्डल भयो होला कल्पना गर्नुहोस् Saraha was, I think he was a monk. He was a prince. I mean, big Donc scandal. Saraha était un moine, र était un prince, Sarah- donc imaginez le scandale. एउटा राजकुमार पनि हुनुहुन्थ्यो र भिक्षु पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि कत्रो ठुलो चर्चाको विषय भयो होला त्यो बेलामा त्यो These days, any university professors, even if they sort of chant some mantra, this mala they hide. Parce que र tous les आजकल professeurs d'université, même s'ils récitent विश्वविद्यालयको un mantra, ils vont cacher leur mala. उपाध्यायहरू प्रोफेसरहरूले पनि यदि माला जप्नुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यो माला चाहिँ लुकाएर जप्नुहुन्छ तर जप्ने बित्तिकै लुकाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ So anyway, Saraha, the big figure for the Mahamudra lineage. Donc Saraha, र c'est une सरपा très चाहिँ grande यो figure dans la lignée du महामुद्रा Mahamudra. परम्पराको एकदमै ठुलो एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा Okay. Short answer for you. Donc je vais vous donner, छोटो जवाफ तपाईँको réponse उत्तरको courte. लागि You should long for this devotion. vous devriez aspirer à तपाईँले avoir cette यो भक्तिको लागि चाहिँ cette तपाईँको मनमा dévotion, यो pardon. आकाङ्क्षा अथवा लालसा जाग्नुपर्छ Long, yeah. C'est tout. त्यति हो जवाफ Reverend Rinpoche, just to save everybody's time, I'll just read out the question. As you referred that gender has no any significance place in Buddhism, to quote you, we should forget gender. But sadly, I studied. Can you read it a little bit slowly? Yeah. As you referred that gender has no any place in Buddhism, just to quote you, you said that we should forget gender. But sadly, I studied human rights and gender justice, and I'm a human rights lawyer. So my cognizance and brain is shaped in that way that I always tend to scan gender balance, and I anticipate and aspire gender equality. I calculate gender whenever I have to make arguments. I count how many women and men speakers are there in an official forum and key positions. I analyze whether the panelist is a manalist or not. I see how many gender-friendly or disability-friendly structures are there, and so forth. I do this because I think that this is my virtue, and I also have a great reverence to the idea that gender is a very small entity in Buddhism. So how do I align myself
with this idea, how do I align myself with this idea of the teaching that gender has no any place in Buddhism and with my professional career and space. And also we talk about indiscriminate compassion in Buddhism, and fitting the compassion in every aspect of our life. But how do I develop genuine compassion to the people who look up to a woman as an object, who commodifies women, specifically, let's say, misogynists? How do I look up to the person who is convicted of rape and who is going through a trial? I always contemplate this when I'm delivering my professional duty. So that's it. Thank you. I think it was not too overwhelming. Okay. Can you reduce the echo? It's pretty. We are getting a lot of echo. Are you a Nepali? Nepali. Please, could you summarize your question in Nepali as well? I'm sorry, but Rinpoche s'est référé au genre, en disant qu'il n'y avait pas vraiment de place dans le bouddhisme par rapport au genre, qu'il n'y a pas vraiment de signification et que c'est quelque chose qu'on pouvait oublier. En ce qui me concerne, je suis avocate pour les droits de l'homme et la question du genre fait vraiment partie de mon travail, c'est quelque chose pour lequel je lutte et j'aimerais faire beaucoup dans mon travail. So I've been shaped, my brain is shaped in that way that I'm compelled to think of gender balance and all. लैङ्गिक समानताको बारेमा चाहिँ म जहिले पनि सोचिरहन्छु हैन यो भन्ने क्रममा चाहिँ जेन्डरको प्लेस बुद्धिज्ममा छैन भन्दा भन्दै पनि हामीले चाहिँ कसरी मैले प्रोफेसनल करियरमा जुन मलाई सिकाइएको छ जुन इन्जेक्ट गरिएको छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ कसरी अलाइन गर्ने एउटा त्यो क्वेशन भयो une autre question c'est par rapport à la compassion non discriminante. Comment générer une compassion authentique envers les personnes et même par exemple envers des personnes qui sont convaincues du viol et qui ne respectent pas les femmes, comment développer quand même cette compassion envers ces personnes-là. पुरुषहरुको लागि अथवा पुरुष महिला जो पनि हुन सक्छन् उहाँहरुको लागि चाहिँ हामीले करुणा कसरी डेभलप गर्ने र स्पेसिफिकली ती मानिसहरु जो चाहिँ रेपमा कन्भिक्ट भएका हुन्छन् हैन रेपमा कन्भिक्ट भएका हुन्छन् पर्पिट्रेटर भन्छु अक्युज्ड भन्दिन रेपमा पर्पिट्रेटर भएका हुन्छन् उहाँहरुलाई चाहिँ हामीले कम्प्यासन कसरी डेभलप गर्ने जो चाहिँ ट्रायलमा पूर्वपक्षका लागि चाहिँ अदालतमा जान्छन् मैले आफ्नो जिम्मेवारी गहन गर्ने क्रममा चाहिँ यी प्रश्नहरु चाहिँ मेरो दिमागमा बारम्बार आइरहन्छ र मलाई सताइरहन्छ भनेर भनौं न हजुर धन्यवाद यति नै थ्यांक यू धन्यवाद बुझ्नु पर्ला हजुरले एकदम धेरै भएन होला यो क्वेशन Est-ce que vous pouvez me résumer juste cette question parce que j'ai oublié. May I? In Nepali? No, in English? So that I can... I think in Buddhism, as you mentioned, we don't have any distinction or place for gender or gender discrimination. So she works in this field, right? So how can she really deal with this issue? You know, she's working with this kind of gender discrimination, and then she. मैले त खै तपाईको क्वेशन मेरो दिमागमा यसरी पनि गयो फेरि यो इको पनि आयो के so I am also not listening to be honest. Okay, that's good. That's good. And then what? So and then how to really kind of combine compassion with this idea of gender discrimination. And then she has also a question regarding the perpetrator of rape. And I lost the trail of what you said. How do we develop compassion to the person who is convicted of rape? Because I have been taught that to prevail justice, you know, to speak for the truth. But then again, Buddhism talks about indiscriminate compassion. So how do I develop this kind of compassion? Probably if you, whoever asks the question, if you can, you know, like remove your mask and talk, maybe I would understand better. My ears are anyway not that good. I already, you know. So also, we are getting a lot of echo today, actually. So somehow, I don't know what happened. Okay. I'm also a little bit vague here, but okay. So I think there's this problem here. Unlike, see, I think we talked about that yesterday.
lot of what I call Abrahamic religion, such as Christianity, Islam, these religions are so associated with the social issues and also a lot of morality, etc., based on the social, political. अब मैले अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ अब यो समस्या छ यहाँ अवश्य पनि यो समस्या छ र अब यसको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यो अब्राहमिक धर्म जुन चाहिँ अब हाम्रो इसाई धर्म अनि मुस्लिम अथवा इस्लाम धर्मको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ जसले चाहिँ विशेष गरेर सामाजिक समस्याहरू अनि राजनीतिक समस्याहरू यी कुराहरूसँग धेरै उनीहरूले चर्चा गर्ने गरेको पाउँछौँ हामीले For me, Buddhism is a bit like mathematics or like biology. You know, for instance, that science. Okay, let's say it's like about talking about the truth. र बौद्ध परम्पराले चाहिँ सामान्यतया सत्यको बारेमा कुरा गर्छ अब एक हिसाबले हामीले अब विषयगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो गणितसँग अथवा विज्ञानसँग बढी अथवा के भन्छ जीव विज्ञानसँग बढी सम्बन्धित छ भन्न जस्तो उपमा दिन मिल्छ बौद्ध धर्मलाई चाहिँ the core of the Buddhism. L'essence du bouddhisme. बुद्ध धर्मको हामीले सार बुद्ध धर्मको आधारलाई कुरा गरिरहेका छौँ So it's a bit like question is okay let's say you are asking our mathematicians. Okay, how do you mathematicians deal with the gender issue? Et donc on va dire que vous posez la question aux mathématiciens, vous allez dire comment vous, les mathématiciens, vous voyez les questions liées au genre. लिङ्गसँग सम्बन्धित समस्यालाई कसरी तपाईले यसलाई समाधान गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको जस्तै हो यो. Okay, so for instance, like okay, Buddhism believes in anicca, dukkha, and anatta. You know, like impermanence, suffering. Suffering. Okay, that's bad. Non-satisfaction maybe is better. And then selflessness. It really doesn't really deal with. It really doesn't. I don't know. It's about the fact of life. अब उदाहरणको लागि बौद्ध परम्पराले चाहिँ अनित्य अनि त्यसपछि असन्तुष्टि अब दुःख भन्छ तर असन्तुष्टि भनौँ यहाँ चाहिँ र त्यसपछि अनात्मको बारेमा कुरा गर्छ र यसले अहिले जगतको अथवा हाम्रो जीवनको यथार्थताको विषयमा कुरा गरिरहेको हुन्छ. Okay, now there's a Buddhist. अब यो चाहिँ Buddhism and Buddhism. अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब बौद्ध धर्म भयो अनि अर्को चाहिँ बौद्धहरू भए. Human culture. All kinds of hang-ups. अब बौद्ध भन्ने बित्तिकै उनीहरूको आफ्नो अब मानव भए अनि उनीहरूको आफ्नो संस्कृति छ अनि आफ्नै किसिमको विभिन्न किसिमका अब धारणाहरू र ग्रहहरू छन्. You know, and then they each have their own cultural background. र उनीहरूको आफ्नो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पनि हुन्छ. Okay, so you raised the question compassion. And which is related here, I feel. So I'm going to answer all of it with that. Et vous avez aussi abordé la question de la compassion, qui pour moi est reliée, donc je vais essayer de répondre à tout en même temps. Yeah. So the Buddhists talk about three compassion, right? Dans le bouddhisme, on parle de trois compassions. I think when people talk about compassion, they are always talking about the first compassion that Buddhists talk about. Et je pense que quand les personnes parlent de compassion, ils font référence à la première compassion que le Bouddha a enseignée. So basically aiming at somebody who's really suffering. Donc en gros, c'est le souci de quelqu'un qui souffre vraiment. Even there, the Buddhist idea of compassion is quite grand. Et même là, l'idée de la compassion bouddhiste est So I would say the victim of the rape and the rapist both are object of compassion. Est assez vaste. Donc je dirais que la victime du viol et le violeur, en fait, les deux sont objets de compassion. And this is very well
explained by Et ça, Shantadeva. c'est très bien अनि expliqué यसलाई par चाहिँ एकदम Shantideva. राम्रोसँग शान्तिदेवले व्याख्या गर्नुभएको छ But this is not the only compassion Buddhists Mais talk ce n'est pas la about. seule र compassion dont बौद्धहरूले तर le Bouddha a parlé. करुणाको विषयमा कुरा गर्ने बेलामा यो करुणाको मात्र कुरा गर्नुहुन्न उहाँहरूले There's the other two compassions which is far more Il y a ensuite sophisticated. deux autres र compassions अरू qui sont दुईटा encore करुणाहरू चाहिँ plus, एकदम beaucoup बढी plus sophistiquées. मसिनो र एकदम विस्तृत हुन्छ One is, like compassion to the beings that are subject to uncertainty. Il y a जस्तै la अब compassion pour tous les अनिश्चितता êtres qui sont को sujets à l'incertitude, शिकार भएका l'instabilité. सत्वहरूप्रतिको करुणा Basically, those who are all subject of cause En and gros, condition. tous ceux qui sont sujets भन्नु खोजेको aux के त causes et भन्दाखेरि conditions. ती सम्पूर्ण सत्वहरू जो चाहिँ हेतु र प्रत्ययको शिकार भएका छन् अथवा हेतु र प्रत्यय को बसमा परेका छन् त्यस्ता सत्वहरू Basically, what I'm saying is that for Buddhists, hungry, starving kid in Africa is object of compassion, but Bill Gates is equally object of compassion because they are both subject of cause and condition. Et donc, बौद्धको dans la लागि perspective एउटा साउथ bouddhiste, अफ्रिकामा donc, un भोकले enfant qui meurt de एकदमै faim, issu de la famille आक्रान्त en भएको Afrique एउटा est un बच्चा objet de la compassion, र साथै mais बिल Bill गेट पनि Gates aussi est objet de la त्यत्तिकै compassion, बराबर tout comme करुणाको l'enfant पात्र qui हुन meurt de सक्छ faim, किन भन्दाखेरि parce यिनीहरू que tous दुवैजना sont नै sujets aux causes et conditions. अनिश्चितताको बसमा परेका हुन्छन् And then the non-dual compassion, now that's really grand. And we have been talking about that अब three doors of liberation. Et donc ensuite, il y a अर्को चाहिँ la अद्वैत compassion करुणा non duel et là, भन्ने elle आउँछ est अद्वैत करुणा extrêmement एकदमै vaste. विस्तृत Et, अथवा मसिनो हुन्छ on a र त्यसको parlé dans les विषयमा हामीले trois अलिकति यही portes de la libération. मुक्तिका तीन द्वारलाई लिएर कुरा गरिसकेका छौँ अलिअलि Okay, now the practical, very practical answer for you. Maintenant, je अब vais faire une réponse très pratique. एकदमै व्यवहारमा उतार्न सक्ने व्यवहारिक जवाब दिन्छु म Let's say you are a On va dire Buddhist, que vous êtes bouddhiste, उदाहरणको लागि तपाईँ एउटा बौद्ध हुनुहुन्छ भने and let's say you are et an vous êtes même activist. un र तपाईँ activiste. एउटा एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ भने It doesn't matter whether you are activist for gender issues, the environment, the political, whatever. Peu importe que तपाईँ vous soyez चाहे activiste लैङ्गिक pour la विविधता question des अथवा genres, pour वातावरणको वकालत गर्नेवाला l'environnement, हुनुहुन्छ जे pour भए la chose तापनि politique. And you should do everything what you Et can. réellement, vous devez faire तपाईँले tout ce qui est en आफ्नो votre pouvoir. हातमा आफूले गर्न सक्ने आफूले गर्न सक्ने जे पनि गर्नुपर्छ To get the justice Pour que la done. justice soit faite. न्याय पाउनको लागि अथवा न्याय दिलाउनको लागि जे गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो बसमा गर्न सक्नुपर्छ But as a Buddhist, you have to discipline yourself thinking that how much is your activism based on some sort of a biased, narrow decisions that you made. Because that's really, really, it's very, very, that can happen. Mais र आफूले आफूलाई हामीले के en कुरामा tant que अनुसारित bouddhiste, गर्नुपर्छ vous अथवा के devez सोचमा essayer पनि de vous हामीले discipliner आफूलाई तालिम गर्नुपर्छ त en même भन्दाखेरि temps que vous हामीले faites vos activités. जति नै Vous demandez राम्रो toute la कुरालाई question वकालत sur गरे combien तापनि votre हामीहरूले activisme, गरिने en त्यो fait, विषयलाई लिएर est गरिने निर्णयहरू plein चाहिँ de biais, एउटा de सीमित préjugés धारणा अथवा et दायराबाट des आउँछ भन्ने décisions qui कुरामा sont हामी होसपूर्ण limitées. हुनुपर्छ This is why I was reading an article just the other day that many times the human rights activists actually terrorize a lot of other people too. Et je lisais un त्यसले article गर्दा कहिले मैले récemment sur अब यो les personnes मानव qui sont अधिकारसँग des activistes, en सम्बन्धित fait, वकालत ont गर्नेहरूले tendance à कहिले terroriser les अरू autres मानिसहरूलाई चाहिँ personnes. एकदम आतंकित बनाउने काम पनि गर्छन् भन्ने Because गर्छु म। you see, we as a human beings are like this. We always end up using even Buddhism as a tool to terrorize. Et अनि parce que हामीहरूको nous, एउटा les humains, मानवीय on finit toujours एउटा par fonctionner comme ça. Même le bouddhisme संस्कारै peut कस्तो हुन्छ être त un भन्दाखेरि objet हामीले pour जे कुरालाई नि terroriser. प्रयोग गर्छौँ र कहिलेकाहीँ बौद्धै धारणाहरूलाई पनि अरूहरूलाई आतंकित गर्नलाई प्रयोग गरेको पाउँछौँ Okay, Tony. Thank you. Hi, Rinpoche. Okay, this is from Zoom. How can I be right now in the moment if even when I think about it, it is already history, is something that has already passed? Donc, It is our It's already a past. It's already, yeah, right now this moment is already gone.
Donc, Rinpoche, comment अब je peux हामीहरू यो क्षणमा être dans le कसरी moment हुन सक्छौँ présent si जबकि त्यो même ce क्षण que je चाहिँ pense तत्कालै par अतीत rapport à ce बनिसक्छ moment est déjà l'histoire. Looks like you are doing Déjà it. passé. Carry on. It's not me, Rinpoche. Whoever. J'ai मेरो l'impression विचारमा que tu le fais तपाईँले déjà, donc अब continue. त्यो Mais c'est pas moi, थाले नै Rinpoche. गरिसक्नु Peu भएको छ त्यसले गर्दा importe. त्यसलाई नै निरन्तरता दिनु होला Okay. अभ्यासको कुरा गरेको Please keep your questions short. It's very difficult for short. me to understand also We will try translate to it. finish this. It's a Make it torture to short. be honest. Okay. Good morning, everybody, and good morning, Rinpoche. So just two small questions. The first question, if you don't mind to share with us, that what the thing that you find you are most struggling with in your life. And the second, yesterday happened to be this Nepali Father's Day. So I want to ask a question about this relationship between father and a child. So my question is, if you are a father, then you have either a boy or a daughter, how you possibly raise your child in the most healthy way than to help the healing this relationship between father and children, both materially and spiritually. Okay, thank you very much. Can you repeat the first question? The first question was, if you don't mind to share with all of us, then what the thing in your life you found is the most struggling with? Okay. Donc, अब दुईटा प्रश्नहरुमा पहिलो प्रश्न चाहिँ यदि तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने रिम्पोचेलाई गरेको प्रश्न तपाई आफैले नै जीवनमा के कुरासँग चाहिँ तपाईले संघर्ष गर्नुहुन्छ तपाईलाई के कुरा अप्ठ्यारो लाग्छ एउटा त्यो भयो दोस्रो प्रश्न चाहिँ के हो त भन्दा हिजो मात्रै हामीहरुले अब कोशी औँसी अथवा बाउ खुवाउने औँसी मनाएका थियौं र त्यो त्यसमा अब एउटा बच्चा र अभिभावकको सम्बन्धको कुरा हुन्छ र एउटा अभिभावक यदि तपाई एउटा अभिभावक अथवा बुवा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नो बच्चालाई सामाजिक र धार्मिक आध्यात्मिक रूपमा सबभन्दा स्वस्थ रूपमा कसरी उसको पालन पोषण भरण गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो What bothers me most, it keeps on changing all the time. Ce qui m'embête le plus, c'est que मलाई के tout कुराले change tout le temps. साच्चै दुःख दिन्छ अथवा म संघर्ष गर्छु भन्ने कुरा निरन्तर रूपमा परिवर्तन भइराख्छ यही भन्न सक्दिन म At the moment, like this past maybe about 9 months, is all the mainstream medias. They bother me so much. Excusez-moi, ce qui m'embête, en fait, ça change अब tout le अहिले temps. Donc il y a 9 कुरा mois, गर्ने हो भने c'était 9 un peu ce qu'on महिनासम्म मलाई यो जुन entend dans les चाहिँ médias. मूलधारको हाम्रो यो मिडियाले खूब दुःख दिएको थियो Because I just see them as the biggest, most sophisticated liars. Et donc र la मलाई चाहिँ pensée के लाग्छ globale des भन्दाखेरि médias, parce que उनीहरू सबभन्दा je ठुला vois les journalistes परिष्कृत comme les झुटो menteurs les plus बोल्नेवालाहरू अथवा sophistiqués. मिथ्याभाषीहरू हुन् जस्तो लाग्छ Now, if I have a children, this is a very important question. Donc ça, c'est यो une जुन question चाहिँ importante par बच्चालाई rapport à हुर्काउने la प्रश्न चाहिँ paternité. एकदम Donc, si moi j'ai un महत्त्वपूर्ण enfant, प्रश्न हो Okay. Actually, I don't know what I will do. I think I'll be terrible, actually. en fait, je sais même pas comment je मलाई ferais. Je pense que साच्चीकै je serais, en fait, इमानदार भएर vraiment भन्नुपर्दा मैले के nul, गर्छु मलाई थाहा छैन सायद म je serais pas एकदमै bon. नराम्रो अभिभावक हुन्छु कि But you know, I'm running 2 schools, 3 schools for kids. Mais en réalité, र je मैले m'occupe de 3 écoles तीनटा बच्चाहरूको लागि तीनटा pour les enfants. पाठशालाहरू अथवा विद्यालय सुरु गरेको छु And I was sharing with the teachers with these schools. Et donc, र j'ai échangé मैले avec आफ्नो त्यो les professeurs de ces स्कुलका écoles. शिक्षकहरूसँग आफ्नो धारणाहरू साझा गरेको थिएँ Educating the kids is the worst thing that one can do. Et éduquer des enfants. Éduquer des enfants, c'est बच्चाहरूलाई la pire शिक्षित des choses गर्ने que कुरा quelqu'un peut भनेको faire. हामीहरूले जीवनमा गर्ने सबभन्दा दुष्कर कुरा नै हुनसक्छ मेरो विचारमा But we have no Mais choice. on n'a pas le choix. तर हामीहरूलाई अरू कुनै विकल्प छैन यसको लागि But it's really, really, it's like from every level, it's the worst thing one can do. Mais en tout cas, à tous les यो चाहिँ niveaux, c'est नितान्त la एकदम chose दुष्कर la plus अथवा difficile que quelqu'un गर्न puisse नपर्ने कुरा faire. En tout जस्तो cas, ça लाग्छ donne मलाई l'impression. चाहिँ। I think some sort of a humility as a father, as a teacher, that what we are doing is not the best, but we have to do. I think that might save us a bit. Alors peut-être ce qui peut nous र sauver एक en tant किसिमको que père, विनम्रता professeur, चाहिँ भयो भने d'avoir सायद un peu हामीलाई त्यसले d'humilité, de बताउँछ होला savoir que कि ce qu'on va faire, dans हामीले tous les cas, जे ça sera गरे pas तापनि le मैले mieux. गरेको कुराले पुग्दैन भन्ने एउटा धारणा
यदि हाम्रो मनमा भयो Yeah, भने this चाहिँ short. Yeah. Okay. Make it short, please. So, Tashtegi Rinpoche and translator sir, we are from China. Can I speak Nepali? Is that fine? English? Yes. But yeah. So, म चाहिँ उहाँको लागि एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। अहिलेको जमानामा मान्छेहरूलाई प्रेममा मायामा विश्वास नै गर्दैन। हामी सबैजनालाई थाहा छ कि मुभीले धेरै कुरा एक्सप्रेस गर्छ, सकिन्छ, सिकाउँछ। अनि आई डोन्ट नो इट्स पोसिबल अर नट द्याट रिम्पोछेलाई एउटा यस्तो मुभी बनाउनुहुन्छ कि जुन चाहिँ प्रेमको बारेमा सरी जुन चाहिँ प्रेमको बारेमा केही पनि बुझिन बहिनी फेरि भन्नु न बिस्तारै हजुर फर्स्टदेखि भन्नु अलिकति त्यो मास्क खोल्नुस् अनि बिस्तारै भन्नुस् मेरो आज दिमाग बिस्तारै हुन थालेछ हामी सबैलाई यो स्पिकर उता पर्यो अनि मलाई चाहिँ म यहाँ राम्रो सुन्दिनँ क्या खास तपाईले जति राम्रो सुन्नुहुन्छ त्यति मैले राम्रो सुन्दिनँ यहाँ ए हस् हुन्छ अब इट्स बेटर अब सुन्नुभयो तपाईले हामी सबैलाई थाहा छ कि मुभीले धेरै कुरा सिकाउँछ एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ सो आई डोन्ट नो इट्स पोसिबल अर नट द्याट रिम्पोछेलाई एउटा यस्तो मुभी बनाउनुहुन्छ कि जुन चाहिँ प्रेमको बारेमा अबाउट फिजिकल लभ टु सोल लभ स्पिरिट लभ मुभी विच टिच पिपल अबाउट एम्प्टिनेस मेरो नजरमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एउटा टपिक हो सबैजनालाई अनि उहाँको एउटा स्मल रिक्वेस्ट छ कि यो she want to give these books to Rinpoche. Is that okay? Yeah. कुन चाहिँ भाषामा अनुवाद गरौँ यो मैले Okay. सुन्नु भएन तपाईँ सुने सो रिम्पोचे इनिशियली तपाईले नेपाली बोल्नुभयो फेरि इङ्ग्लिश भन्नुभयो म अब so she's saying that media is a very powerful means to teach, educate or convey something. So she's expecting that Rinpoche at some point would make a movie that would distinguish between physical love and spiritual love and also teach us the emptiness of ourselves. होइन त बहिनी हो यही हो के हो हजुर प्लिज Okay. Yeah. Thank you. Thank you. You know, I really don't want to sort of claim that I make films so that I can teach people. It's a big risk. Je ne veux absolument pas dire que parce que je fais des films, je peux dire quoi que ce soit aux gens. C'est un gros risque, ça. 8 दिन भन्दाखेरि मैले फिल्म बनाएर मान्छेहरूलाई के कुरा सिकाउन सक्छु भन्ने कुरा म भन्न चाहन्न Also, I'm in certain area, I'm in a position where even I'm having a cup of tea, they say, oh, it's a teaching. Et je suis dans une telle situation, dans un domaine qui fait que même si je bois juste un thé, on va se dire, ah, c'est un enseignement. Please, if there's anybody who wants to sort of take away my job sometimes, just for a week. Et donc, s'il vous plaît, si vous voulez me remplacer de temps en temps, même si c'est qu'une semaine. But I think your aspiration is good. Mais je pense que votre aspiration est bonne. I will aspire to think about something. Je vais moi-même aspirer à penser à quelque chose. केही कुरा चिन्तन गर्नको लागि चाहिँ संकल्पबद्ध हुन्छु Okay, please. Thank you. Yes. Okay. One more from Zoom. So we're going back to the Buddhist monk who was embraced by Vajrayogini. As a monk, how could he not push away a female who was going to embrace him, just in case she was Vajrayogini? He might break his vow. So how to avoid to make such kind of mistake for this monk? If this monk did not push her away, what should he do then? Donc on revient à l'histoire avec le moine bouddhiste.
भिक्षुलाई वज्रगिनीले अङ्गला मार्न आउँदाखेरिको घटनाको कुरा भयो र एउटा भिक्षुको जुन चाहिँ आफ्नो सम्बर हुन्छ त्यसलाई नबिगारिकन अब वज्रगिनी आयो भन्दैमा एउटा भिक्षुले उसलाई खेल्नु त स्वाभाविकै हो नि होइन र त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा वज्रगिनी आयो र उहाँले त्यो आउँदाखेरि उहाँलाई जुन अङ्कमाल गर्नुभयो त्यसलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्नलाई भन्नु पर्यो अब उहाँले कसरी के गर्ने त त्यो बेलामा उहाँको साँच्चीकै के गर्नुपर्छ उहाँले त्यो बेलामा जसले गर्दा उहाँको आफ्नो भिक्षु सम्बर पनि बचोस् र वज्रगिनीको अधिष्ठान नै मिलोस् मैले यसलाई प्याराफ्रेज गरेँ है सरी I think the story is trying to tell us how great he was a Vinaya practitioner, but he can, the story is also telling us that how he can actually aspire to practice the Tantrayana, which is, well, from the Tantric point of view, more important than the Sharvakayana. अब यो कथाले के कुरा दर्शाउँछ भन्दाखेरि ती भिक्षु विनयका कति राम्रा अभ्यासी थिए भन्ने कुरा त दर्शाउँछ तर साथसाथै उनी एउटा उनी तन्त्रको अभ्यास गर्ने परिधान गरेको व्यक्ति पनि हो भन्ने कुरा दर्शाउँछ र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि तन्त्रयान श्रावकयान भन्दा चाहिँ उच्च यान हो त्यसले गर्दाखेरि तन्त्रलाई माथि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो Okay. धन्यवाद Yeah, whoever. Yeah, thank you. Hi Rinpochela, I hope you're in good health. So my curiosity is primarily what is my existence? I know, because I know I exist, my families do exist, and that is a thank God. So my worries and sorrows exist, and my happy moments, which are like immemorial and unforgettable, are also existing. And there are like beggars who are crying because of this hungry stomach. And in the other hands, the haves are accumulating like forever. So what is the illusion that Buddha has always tried to hint on us or teach us, which maybe so far I have not been able to understand? I mean, I pretty much agree the principle or the, about the impermanence, because it is clearly and so good in a sight, but illusion, even though I try to contemplate, I do not have any forms. Like I'm sticking in this question, given that I am asking answers that Buddha roamed around ages to have, like the answers to it. So, but still we are in real need of something relatable and connecting to practice today as modern day Buddhism. So yes, I want to genuinely know the illusion, the principle and the thin line of illusion. So okay. Thank you. Yeah. हजुर नेपाली हो? Yeah. हजुर जानुस् न प्लिज आज मलाई सहयोग गर्नुस् आई एम रियली टायर्ड Donc, ma question aurait été qu'est-ce que ce serait mon existence? Parce que je vois que j'existe, ma famille existe, mes bonheurs existent, mes souffrances existent, je vois qu'il y a des gens, des mendiants dans la rue, donc il y a de la souffrance qui existe. Donc j'ai un peu du mal à concevoir cette illusion que vous nous avez enseignée. Et donc je suis tout à fait d'accord avec le principe de l'impermanence, c'est quelque chose que j'arrive à contempler et à voir, mais j'ai beaucoup plus de mal avec cette illusion que je n'arrive pas vraiment à palper, puisque, alors je sais que Bouddha a cherché pendant des années pour comprendre ça, mais en tout cas moi j'aurais besoin de quelque chose d'un peu palpable pour comprendre Okay, I cette think illusion. Buddha never said it does not exist. Buddha Never said it's not an existence. Le Bouddha n'a jamais dit que ça n'existait pas. अस्तित्व छैन धर्महरूको अस्तित्व छैन कहिले पनि भन्नु भएन You know, therefore, it exists, non-existence, both, neither. र हामीले चतुष्कोटिहरूको कुरा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ अब छ छैन छ पनि होइन छैन पनि होइन छ पनि होइन पनि होइन छैन पनि होइन पनि होइन भने चारवटा कोटिहरू आउँछन् Like a rainbow. Donc en fait, c'est उदाहरणको comme लागि एउटा un इन्द्रनीलाई arc-en-ciel. लिन सक्छौँ हामीले I think we discussed On en a this. parlé. Okay. हामीले यसको विषयमा चर्चा गरिसकेका Okay. छौँ हजुर Thank you for answering so many questions. My question is about the three doors of liberation. It seems like there's a lot of creative potential and like sort of boundless potential from a creative side, but the path itself often is like extremely formulaic, and the sort of creative expression gets sort of cut off when you enter this very formulaic path to that. Can you talk about this, the
how to bring creativity into the Donc, path. en résumé, comment amener la créativité à la voie? Parce que, en fait, les trois portes de la libération semblent une porte aussi à la créativité, mais en même temps, la voie paraît un peu formelle et j'ai l'impression que ça coupe un peu toute la créativité. Donc, comment amener la créativité dans la voie? यसमा त्यो सृजनात्मकताको पक्ष चाहिँ उजागृत हुन अलिक कठिन होला जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा यसलाई कसरी सृजनात्मक रूपमा चाहिँ हामीले उतार्न सक्छौँ त व्यावहारिक तहमा? It's a bit like a supply and demand. यो चाहिँ अब आवश्यकता र त्यसको पूर्तिको जस्तो कुरा भयो। Formally, coffee shops are really good. एक किसिमको अब यो सूत्रगत फर्मुले के भन्छ कफी शप हुनु राम्रो कुरा हो। If you go to Starbucks, you are quite sure what kind of Americano you will get. Donc, si vous allez au Starbucks, vous savez exactement quel Americano, quel café vous allez avoir. But now, if you want to be more daring, maybe there's a boutique coffee shop. Apparently, they serve coffee with chili. Now, this is what you need to be a little bit of daring. Maintenant, si vous voulez oser des choses un peu plus स्टारबक्समा नगइकन एउटा बुटिक कफी शप अथवा अलिकति फ्रेस खाले कफी जानु हुन्छ त्यो कफी शपमा सायद तपाईलाई खुर्सानीको स्वाद भएको कफी पनि दिन सक्छ होला तर त्यस्तो स्वादको लागि तयार हुनको लागि तपाईमा अलिकति साहस त चाहिन्छ नि। Okay. Thank you so much, Rinpoche. As we're talking about how science and intellectual thinking tend to bring more distortion to our perception of reality, a very interesting comparison came up to me, like take an example of a fish. He has a simpler mind than us, I assume. So there will be less science or like rational thinking, but that also doesn't necessarily mean that he perceives the world more correctly than us, right? And also like seems to me that the rational part is also very important Tibetan Buddhism, like for example debate. So I was thinking to what extent or specifically, what kind of absence of science or rational thinking are we looking for, and also what aspects are good that we should keep to help us practice Dharma? Okay, so basically, what amount of rationalism we should keep? Donc, en gros, pour résumer, c'est quel montant de rationalisme, quel degré de rationalisme on devrait garder. तर अब मलाई एउटा राम्रो उदाहरण के पनि मैले यहाँ ल्याउँछु भन्दाखेरि एउटा माछाको मस्तिष्क र मेरो मस्तिष्क मात्र धेरै ठुलो भिन्नता हुन्छ। माछाको मस्तिष्क एकदमै आधारभूत हुन्छ, त्यसमा धेरै क्लिष्टता हुँदैन, त्यो धेरै जटिल हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उसले देख्ने दुनियाँमा त्यति धेरै निमित्तहरू संकेतहरू र तर्क हुँदैन। तर बौद्ध परम्परामा चाहिँ तर्क गर्न अनि त्यसपछि शास्त्रार्थ गर्न डिबेट गर्न हामीलाई प्रोत्साहित गरिन्छ भने अब यो जुन चाहिँ निमित्तहरू अथवा संकेतहरू र तर्कको कस्ता कुराहरूलाई हामीले त्याग्ने यो तर्कको दायरामा र कस्ता कुरालाई अँगाल्ने जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो दुईटाको बीचमा चाहिँ तादात्म्य स्थापना होस् अथवा एउटा ब्यालेन्स आओस्। This is quite a big question. You should study Brahmana Buddhist epistemology. C'est une grande question. Vous devriez étudier l'épistémologie bouddhiste Brahmana. I would, okay. So, in order to validate something, we usually use a direct cognition or inferential logic. Donc, de manière à valider quelque chose, on utilise la cognition directe ou la logique inférentielle, référentielle. But the direct cognition is a problem because a lot of the time, direct cognitions are very subjective. Mais la cognition directe est un problème parce que souvent elle est très subjective. Okay, so this is why in the Brahmana the yogic cognition is considered the best. Et c'est pour ça que dans le Brahmana, la cognition yogi est considérée comme la meilleure. Okay. Hello, sir.
Hello, ladies and gentlemen. Happy Father's Day. Sir, you seem like quite a comforted person, huh? So I was wondering if this is the case. If this is the case, where did this beautiful confidence come from? Donc, vous avez l'air d'être une personne qui a très confiance en elle. Donc, si c'est le cas, d'où vient cette confiance, cette belle confiance? Merci beaucoup. Donc, je vais juste citer Shantideva. Et je vais le modifier un petit peu pour pouvoir répondre à votre question. Donc si vous voyez que j'ai de la confiance, j'ai confiance en moi, c'est que vous aussi vous devez en avoir. एकदम आत्मविश्वास भएको देख्नुहुन्छ भने त्यसको अर्थ के हो भन्दा तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास धेरै छ भन्ने कुरा जनाउँछ. I read a translation that Buddha said, in all things there is neither male nor female. So should translators honor that by using maybe they, them pronouns in their translations? And are there any texts or sutras that kind of regard or relate to this idea of forgetting gender? Donc, j'ai entendu que donc une fois le Bouddha a dit, dans toute chose, il n'y a pas de féminin ni de masculin. Donc, est-ce que c'est quelque chose que les traducteurs devraient prendre en compte? Et est-ce qu'il y a des textes ou des sutras qui prennent en compte justement cette non-référence au genre? Donc, en fait, je pense qu'il y en a quelques-uns, oui. Et votre suggestion est très très bonne. म नेपालीबाट बोल्छु तर इङ्ग्लिस आउँदैन रिम्पोछे नेपाली यो धेरैसँग रिम्पोछेको प्र्याक्टिस र यहाँ धेरै फलोवर छ तर हामीलाई रिम्पोछेको धेरै आवश्यकता छ अनि हामीलाई त टिबेटियन भाषाबाट माबु ठेपा नासिङ भन्छ आमा र छोरा बेटी जस्तो हुन्छ रिम्पोछे अहिले यहाँ धेरै प्रोग्राम राख्नुहुन्छ कि भनेर धेरै धेरै आशा छ रिम्पोछे प्लिज के राख्नुहुन्छ यहाँ नेपालमा धेरै धेरै प्रोग्राम राख्नु होला धेरै हामी आशा लाग्छ प्लिज थ्याङ्क यू रिम्पोछे थ्याङ्क यू I think you got it. I didn't understand. So no, I'm just kidding. Donc, il a dit qu'il y avait beaucoup de Népalais ici qui ont de la dévotion envers vous. Et donc, il ne comprend pas l'anglais et la langue tibétaine est un peu comme ça, comme la mère. Et donc, il voudrait qu'il y ait des programmes qui soient faits au Népal pour qu'ils continuent à enseigner. Donc, c'est une requête. Donc, je vais prier pour pouvoir réellement aider. Namaste Rinpoche. So the past 2 days you taught us about how culture hijacks karma, and the teaching of Buddha, what is essential to Buddhism is actually the dharma and attainment of awakening. But a lot of people who are Buddhist are not so because they practice the dharma or because they seek awakening, but because they are born into a Buddhist family. Or mostly because of the cultural aspect of Buddhism. So what do we make of this? Excusez-moi, j'ai pas très bien entendu.
Donc, j'ai pas bien entendu ce qu'elle disait, mais je crois que ce qu'elle disait, c'est que ce que dit Rinpoche, c'est qu'on pratique le Dharma pour pouvoir s'éveiller. Mais en réalité, au Népal, il y a beaucoup de bouddhistes qui pratiquent parce qu'ils sont nés dans des familles bouddhistes. Et c'est plutôt pour l'aspect culturel, c'est une question culturelle. Donc, que faire avec, dans ce cas-là? I think that cultural Buddhism is very, very important. Je pense que le bouddhisme culturel est important. Les bouddhistes qui sont nés dans une culture bouddhiste. Alors probablement ils ne voient pas l'image entière de ce qu'est le Bouddha Dharma. Et je pense qu'il faut qu'on essaie de pouvoir les aider dans ce sens-là. But the culture, let's call it Buddhist culture, whatever, the Himalayan culture is so important. Mais la culture, on peut l'appeler la culture bouddhiste ou la culture himalayenne, est très importante. Because this will, we already have so much identity crisis. Parce qu'on a déjà tellement de crises identitaires. Okay, I'll give you a good example. Donc je vais vous donner un exemple. When I was young, my parents called me Lepo. Quand j'étais petit, mes parents m'appelaient Lepo. Et ça veut dire idiot. And I've realized that in Nepal you also have parents give children name Lata, Lati. Et j'ai réalisé qu'en fait au Népal, les parents aussi donnent ce genre de nom, Lata, Lati. In about 50 years' time, when all these, New York dwelling Nepalis, when they come back. Et donc dans 50 ans, quand tous ces jeunes Népalais vont revenir, and if you call your children Lata, Lati, they might end up suing you. Si vous appelez vos enfants Lata ou Lati, ils vont vous mener en justice. It's a child abuse and all of that. C'est un abus et c'est tout ce genre de choses. So there are a lot of these cultural nuances that can be, that are, I don't know whether they are precious or something. There's that, and they're quite important. Et donc il y a toutes ces nuances culturelles. Alors je ne sais pas si elles sont précieuses, mais en tout cas elles sont importantes, j'imagine. Okay. Did you want to talk? Okay. Yes, please, the lady. Thank you so much, Rinpoche. I really appreciate your Q&A session a lot. I wish we will always have this precious chance to be able to effectively and genuinely ask questions to you and also get answers from you. And here I will ask two questions. I'll try to make them short. The first one is, when I visualize a deity in front of me, to whom I need to develop a very intimate, genuine trust and love and devotion, I don't know what kind of mindset I should have. I don't know whether this deity is someone abiding in somewhere, or if he's my own reality, or if this image in front of me is just my own mental fabrication. I'm very confused about that. This is my first question. Shall I reply that, translate that first? Yes, please. Donc, merci beaucoup Rinpoche de nous autoriser à poser des questions et j'espère que ça pourra se passer encore
beaucoup de fois pour que vous puissiez nous répondre. Donc j'ai deux questions. La première, c'est par rapport à la visualisation. Quand je visualise une déité en face de moi, je dois développer une espèce de confiance intime, une dévotion, mais je ne sais pas trop dans quel état d'esprit je devrais avoir à ce moment-là. Est-ce que cette déité demeure quelque part? Est-ce que c'est ma propre réalité? Est-ce que c'est juste le fruit de mes propres projections? Donc de manière fondamentale, la déité n'est pas autre que vous. Elle n'est jamais à l'extérieur. Okay, the second question. Thank you. The second question is, for example, if we visualize Sharia Kang celestial palace, the four gates in general indicates the four qualities, like four immerables. So my question is, do the four gates actually appear in a Nirmanakaya level or not? If they manifest, how can they naturally in union with quality? Et donc la question c'est, quand je visualise Sharyakon, donc je visualise le champ, le royaume pur avec les 4 portes qui ne sont pas autres que les 4 qualités incommensurables. Et donc ça se manifeste à un niveau Nyamanakaya. Ici, oui, comment en fait ça c'est associé aux 4 qualités incommensurables. Okay. You are asking quite a complicated Donc ça c'est une question assez compliquée. Tantra is really, it's infinite. Le tantra est infini. I mean, there's 4 doors, there's 1 door, sometimes there's no door. Il y a les 4 portes, des fois les 2 portes, parfois il n'y a pas de porte. And sometimes the deities, you know, even the deity, sometimes there's a central principal deity, like the king or the queen, and then there's the entourage. Et parfois dans les déités, donc il y a la déité centrale comme le roi, la reine, et ensuite il y a l'entourage, l'assemblée. But sometimes suddenly an entourage becomes the master and the lord or the lady becomes the entourage. Et parfois, c'est l'entourage qui va devenir le maître, la déité principale, et alors que le seigneur ou la reine qui est au milieu vont devenir eux l'entourage. All these are basically to deconstruct our habitual patterns. Et tout ça, c'est en gros pour déconstruire nos habitudes. Et ce qu'on a tendance à penser, ça s'accroche comme le Seigneur, les serviteurs, à l'intérieur ou à l'extérieur du palais. Donc, en fonction du texte auquel vous faites référence, ce sera très différent. Par exemple, dans Kala Chakra Tantra, Tantra Kala Chakra, one of the deities' name is the deity that wants to yawn. Donc une des déités, son nom c'est celle qui souhaite bailler. His consort is his consort. He's embraced. He is in union with his consort. She hates yawning. Et cette déité est en union avec sa consorte qui, elle, déteste bailler. So it's like that. It's just. Donc c'est comme ça. But please pursue tantra. Mais s'il vous plaît, continuez à pratiquer le tantra.
it's a wisdom. If Tantra dies, then there's no ornament in the world. Si le tantra meurt, alors il n'y a plus d'ornement dans le monde. Donc nous allons faire une pause. Okay. So we take a break.